Hello everyone, welcome to the Fat Mario, and here's a new podcast on World War One and Two. So, I invited guest Nihar. He's my brother, uh, and he likes to spend his more time in the history stuff in the internet, like in any form, like memes and YouTube video shorts. He likes about what has happened. So I thought he'll be the best guest to share his insights on the topic World War One and Two. So, Nihar, can you introduce yourself? Hmm. Uh, Hello everyone, I'm Nihar. I'm a military enthusiast. I like searching about history और specifically मुझे बहुत वो लोगों के बारे में बहुत जानकारी है और I spend a lot of time. तो हम जब बुकिश मतलब स्कूल में पढ़ते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता. But once you go and search for it on your own, you will learn things that are quite interesting. And when you don't have the burden of remembering the dates, अपने आराम से you can see what you find interesting and you can stick to that. Hmm. So history is something that is very unique and it helps you define what it is now. So thank you also for inviting me on this podcast. And Hmm. let's start. So, previously we discussed about what is a war and pros and cons of it. Uh, Nihar, what is your thoughts on the pros of war? Like, what is advantages of war? And it comes down to pros of war. The entire reason of what happens is because there's a huge disagreement between two parties or multiple parties, right? As we've seen in world wars. So one of the major advantages that you will get if you're on the winning side is that can be any natural or man-made resource, or it can also be intellectual resource. Like you've seen during World War II, the German scientists were very well known for their rocket capabilities. And after the war was over, these scientists had immunity from both the countries, that is Russia and the United States, or erstwhile USSR and United States. And these scientists were picked by these two groups, and then they fought the space war, and that led to the entire Cold War era. Hmm. So the main thing that I can see that is a pro of war is your intellectual science. You can also see resources, as I said. Finance will be a burden, but it will get better if you exploit countries. That's what usually happens in a war. The losing side gets exploited. Hmm. And not just that, you'll also have more land. And well, if you are somewhat like the Japanese during World War II, you can also deny all your war crimes. Hmm. Um, and other pros of war, you'll find human literature. So during the times of war, there will obviously be some letter writing going on back and forth. Hmm. You'll find that there'll be new historical figures emerging out. And as always, there will be a bunch of people fighting against the war, that is, anti-war people. Hmm. In सबका भी होता है. So you can see all of that, and that will, eventually add up to human history's literature collection, and not just that, philosophies. So a lot of it changes during the war. So Hmm. what I think of right now, I'll not think of the same thing after actual war happens. So all of this I say as a third person sitting on an armchair, right? Hmm. But you ask a person that has actually fought a war, they might have different opinions. So the general consensus might change after a war, and that might also be a pro because nobody wants wars, right? Hmm. But what is the ultimate reality of humanity? Hmm. So that's what I think is. I Okay. hope so. And my viewing, I, uh, I hated history. Like जब मैं पढ़ता था, जब टेंथ क्लास में ही लास्ट हिस्ट्री था मेरा लेक्चर, उसमें भी मेरा ध्यान नहीं था क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, डेट्स, नेम्स, प्लेसेस, और मैं कंफ्यूज होता था, लाइक कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ दिस कंफ्यूज me a lot. So now I'm just curious now to know about what I had learned. Like bits and parts में याद है मुझे, but I want to nourish them all. So we'll go in this process. Like I am into into storyline or story type genre. So let's fix something. Let's take one topic, World War One. So उसमें, according to you, who is the protagonist?
Like, who is a hero according to you? It's not factual, but That is a very hmm, hmm. So World War One was on a scale, but it was the first great war that we have seen in the world, right? And the sites were almost the same. So we hmm, had Austro-Hungarian Empire, hmm, the British Empire, and the other side with the Russians and the Americans and so on. hmm, So I would say that whoever won the World War One was the better one. I personally support them. It's unusual to be first of Austro-Hungarian Empire was a monarchy, and they had a few radicalist views. hmm, और टर्की के बारे में भी मतलब सेम उठाया सकते हैं इसीलिए तो खिलाफत मूवमेंट हुआ था इंडिया में वर्ल्ड वॉर वन के so that is also one more thing because the Khalifa was the one who was ruling Turkey and they had their own laws which most other people wouldn't comply with in present day. So what I would say is the current parties that have won have helped shape the world to be a better place for what it is now. It hmm. could have been much worse, but better. Okay. And So I would say the allies were better. what was the trigger point of the First World War? Like, what started it? So Duke, Archduke of Austrian Empire, he was shot in a very random instance. So what happened was that his driver took a wrong turn, and there was this Ah, one guy who decided to assassinate him, right? And ah, that one thing started a bunch of events that eventually became the World War. And specifically about World War One, the Balkan area, it was a very unstable area. It currently still is a very unstable area. तो अभी भी आपको मतलब एक एक टाइम में आपने सुना होगा यूगोस्लाविया कंट्री का नाम hmm. तो अभी वो कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता क्यों because it broke up into a bunch of other countries. Oh, Same way like USSR. USSR was compilation of Russia and 13 other countries. The Yugoslavia is also something similar, hmm, but Yugoslavia couldn't exist within the Russia or USSR hasn't continued to exist. hmm, And right now the Balkans is still a very sensitive area. So we have places like Turkey, Greece, Serbia, all of these countries they still have infightings among themselves. So right now Kosovo is the country that India currently doesn't recognize, but the world otherwise recognizes a country called Kosovo. So this is also a country that is carved out of Serbia, hmm, and there's a country called Bosnia and Herzegovina. So all these countries come among the Balkan region, and it's a very hot place. मतलब जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बारे में we keep fighting, right? hmm, It is like that, but it has been even before India and Pakistan because India and Pakistan is a relatively new thing. hmm, You know, 1947 के बाद भी ये सब हुआ. Before that, uh, the Balkans always existed and they were always fighting. hmm. So that is So, what I think was the main uh, reason. oh, Balkan fighting and the major countries that were surrounding the Balkan area, they wanted power over these Balkan countries because they were rich in minerals and everyone wants more land, right? hmm, That is exactly why they started picking sides. So the BSR one, everyone had to pick a side, one or the other, in the World War One, hmm. and that's what led to other countries joining in. It eventually became what it is. Hmm. So, according to me, a story begins at a initial part, like introduction part, and a conflict, and what steps did he took. I mean, a protagonist takes a decision, and he'll face the consequences and the end part. So let's go in this order. So initial part is the gunshot one, assassin one, like the driver's wrong turn one, and it's a. I think it's a funny incident, All right? just a chance. It's a funny incident, right? Exactly. It's First time he missed a bomb, and the second turn he took, and he took a shot. So that's the starting one, exactly. and you know the reason. I mean, why he took a shot. The person who actually took a shot himself wasn't willingly there. मतलब उसको किसी ने सुपारी दिया था मारने के लिए. Oh, okay, And turns out he did his work. Uh, so turns out he did the work very well. okay. Successfully failed and Which is successful. what, Uh, yeah, successfully failed. it's like Successfully failed, it's right? like 40 found. I found it. uh, Yeah, so what happened. it's like that. Okay. And
usually what happens when a figure of higher authority is killed, there's a political unrest, right? वो Hmm. तो होता ही है. अभी आप देख लो कोई बड़े लेवल का पॉलिटिशियन वहां पे हो गया तो nobody is going to stay silent, right? Hmm. And some people have taken advantage of this political unrest for their own obvious. उनका power सबको power चाहिए at the end of the day. Hmm. So those people that actually wanted power for themselves, they caused more unrest, and that eventually led to a very unstable situation in the entire region. Hmm. That's what we call now Europe, and eventually that spread into World War II as more countries from different continents were taken. Hmm. What you have to remember is that during this time, European countries जो थे, तो बाकी सारे Asian और African countries और even the Americas, वो सब तो अभी colonize करने के time पे चल रहा था. Hmm. So once one country picks a side, basically उनके colonies भी वही side पे थे. Hmm. So that basically what happened was it shot up into a world war sort of a situation because all these European countries had colonies and the colonies wouldn't join the side the same way that the colonizers were. हाँ So that is what तो caused this world war situation. हाँ Because अ, अगर तुम सोचो, why was India even involved in the world war in the hmm. first place? Yeah. Because the British involvement, right? Hmm. So British involvement caused us to volunteer troops who Hmm. went to Europe, who went to other countries like Singapore and Malaysia to fight the Japanese in this case. It's like a So when forcible this decision, like actually not a forcible decision, but not voluntary either. हाँ okay. We had to fight because we were a part of a bigger empire, Hmm. not because we wanted to fight, not because it was our war. I can keep saying that it is not our war. Hmm. Wars in Europe are not our war. That what happened was that we were under the British crown, which Hmm. led us to fight in that war, even though it was not our war. like it's So like it was our loss at the end of the day. it's like मम्मी ने धनिया भेजने को बोला तो जाना ही पड़ेगा, मना नहीं कर सकते वैसा टाइम. हाँ. Okay. Yes, right. Operation not me as the British Empire in this case. हाँ. So हाँ, why did, okay. So first thing, a war किन दोनों के बीच में हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? हंगेरी एंड First World War was again हम्म. Austria-Hungary and Turkey were on one side. But हम्म. eventually Japan was fighting World War II. It was not part of World War One. हम्म. So all these countries that are related to Austria-Hungary. So what we have to remember, one thing is that उस time पे Germany का unification चल रहा था. So जर्मनी there का. was this route called Otto One. हाँ. Unification. व्हाट इज So there यूनिफिक? was this route called unification मतलब अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है ना हमारे हम्म. देश के. हम्म. So how he unified Hyderabad with the rest of India यूनिफाइड, ओके ओके and ओके. how he consolidation basically. हम्म. ओके ओके. तो तब एक बंदा था Otto von Bismarck बोल के. हम्म. So he was known as the Kaiser. Kaiser Wilhelm. Okay. हम्म. He was a king or very influential, very famous person who popularized standardized German. जैसे अभी भारत में हिंदी बोलते हैं काफी हम्म. काफी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं. हम्म. तो what his aim was कि जहाँ पे भी लोग जर्मन बोलते हैं उनको हम्म. सबको यूनाइट करके एक ही कंट्री में बताने का है. मतलब ऑस्ट्रिया और जर्मनी. हम्म. Austria was also is still a country that speaks German. हम्म. Uh, Hitler was also actually from Austria. ओके. So, हाँ. yeah. So इस टाइम पे जर्मनी का यूनिफिकेशन भी चल रहा हम्म. था. As usual, there was political unrest in the Balkan region. Countries like British wanted a little control over that. हम्म. Germany wanted a little control over that. Everyone wanted a piece of it, हम्म. right? So these small wars became a bigger war with higher powers, stronger influential powers taking the part. So the war is in between who. That's a really tough call because eventually, World War One grew out to be something that was never expected. It हम्म. started as a small war in the Balkans, which turned out to be a huge thing with multiple millions of people dying in it. So it is not right to determine whose fight it was. But we can see who won and who lost. Because हाँ. clearly the Allies won, right? And Turkey and Austria-Hungary lost. Austria-Hungary was later divided into Austria and Hungary separately, and Turkey में वो खिलाफत था ना खिलाफत. So we all studied about Khilafat movement, that Indians supported Khilafat movement with the help of Gandhiji and हम्म. everyone. So Khilafat movement. So this thing, Khilafat, they want to, we cannot say we can say what we can.
So that time we I was telling about how healthy it was very unstable, right? So that time this Ottoman Empire was the powerful empire in that region. And what they were doing is they were suppressing the smaller kingdoms like the Greece, the Macedonians, all of these tiny other Hmm. Montenegrins, all these tiny other countries were being oppressed by Ottoman Empire. Hmm. That's why they started rebelling amongst themselves, trying to get freedom and everything, Hmm. which led to Turkey and the Ottoman Empire and the other side changing, picking their own sides and allies, Hmm. which Just a caused this moment. war. Okay. Now you mentioned about that unification thing, the Ottoman thing. Do you believe or agree in that in that concept, like like-minded people should be at one place, or it should be diverged in any other parts? It's okay. German is also having localized, right? The same way Hindi does, the same way any other language does. Hmm. So when you aim at unifying something, it should be all inclusive. मतलब सबको ध्यान में रखने के बाद we have to include everything and Hmm. everyone's beliefs and causes. But doing that is practically very difficult. हाँ. So let us say, I still think about how miraculous India is for that matter. हाँ. Because आप सोचो इतने सारे भाषाएं हैं and there's so much infighting going on amongst the Indian citizens. But at the end of the day, we still stand strong as a country, right? Hmm. So if you have that sense of unity and nationalism, then it is good in meaning that you can sustain. Hmm. But in cases where there's extreme infighting among people, Hmm. it is not possible. अभी आप बेल्जियम की एग्जांपल देखिए तो बेल्जियम में मेजर दो लैंग्वेजेस चलते हैं वो है फ्रेंच और डच Okay. तो दीज आर टू डिफरेंट कंट्रीज मतलब नेदरलैंड्स अलग कंट्री है फ्रांस अलग कंट्री है और थोड़ा थोड़ा जर्मनी बोल लेते हैं वहां पे Hmm. so but how are they coexisting? It's because they have both accepted their differences and Hmm. accepted to respect each other also, right? So it's not like one is going to impose himself on the other, or something like that. It Hmm. is not like that now. So they can live peacefully among each other. But on the same thing, like, let us take the example of India and Pakistan also, right? It's not just language, there are multiple other factors that you take into consideration. हाँ, तो अगर आप दो जर्मन स्पीकिंग बंदों को एक ही जगह पे रख दो so they will obviously they might have similar opinions or they might have different opinions. That is human. Hmm. So I can't really say if unification was a good thing or a bad thing Hmm. because everyone wants their own slice of cake. Everyone और बोल दो कि भाई यही बंदा है आपके आपके ऊपर रूल करेगा क्योंकि he is the ruler of this place and he speaks this language, one nation, one king, one rule. Hmm. सब बकवास है Hmm. बकवास है इज जस्ट दैट थोड़े लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा No, like these थोड़े it's an लोग decide to opinion. rebel using arms हाँ. India Hmm. so but still if you look at the example of India you can see that multiple places are existing together coexisting and actually doing pretty हाँ. good The so next I would say question it is, depends on how the हाँ. mentality is हाँ. My next question is based on the example of India itself. Like I'm into movies or stories, so I take an example of this. So there is a North Indian movie or a South Indian movie. Though they all say it as a pan-Indian movie, it should be taken as just a movies, but they're mostly divided into Bollywood and Tollywood, or the southern part like Tamil industry and Malayalam Hollywood industry. son Huh. yes So if any movie is released, there is a clash between Mhm. these two communities, we can say. Yeah that So is true हाँ, so by unifying a language, a set of language as एक अलग से एक हिंदी बोलने वाले सब अलग और तेलुगु और एनी अदर साउथ इंडियन अलग कॉन्फ्लिक्ट तो अभी भी हो रहा है सो सही माय क्वेश्चन इज यूनिफाई होने के बाद भी अगर लड़ाई हो रहा है सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग यूनिफाइड so point of being unified is a common threat तो अगर आप देखोगे तो हमारा कॉमन थ्रेड क्या है you know that it is clearly it's either Pakistan or Bangladesh or any हम्म of the neighboring countries that want to take us over, right? हम्म Obviously, they have their own infightings like Balochistan is going on, Kashmir, Azad Kashmir. वहाँ पे भी चल रहा है ऐसा नहीं है कि वहाँ पे नहीं चल रहा हमारे नहीं चल रहा है सब जगह तो चलता है
because at the end of the day, you have to see the way we were unified. So, US example, they took, huh? So there are two types of countries that are existing together. In a sense, India is a country that is holding together. मतलब central के पास बहुत power है, and that is holding all the states together. अभी आप यूएस को देखोगे तो usually the states have no power, but things like defense or finances के बारे में तो तब you will look at the central government. Hmm. But otherwise, the states have a lot of autonomy. तो इसीलिए Hmm. इनको कहते हैं यहाँ United States of America Hmm. because these the US started as original 13 colonies. Okay. And once they got together, they started adding in more people voluntarily. Hmm. And then it was civil war, all of that. Hmm. So what is existing in US now is an amalgamation of where people are coming together and Hmm. being together because they want to. Hmm. They don't want to break away. They want to be together. Okay. So that is one type. The other type is India, let us say, for example. We have a common aim. That is, Hmm. we have to grow and we don't want our enemies to take us over. Hmm. So it's like enemy of my enemy is my friend type of style running up it. Hmm. So we are all together for that reason. But that does not guarantee that there will be no infighting amongst us. Okay. So there is no guarantee. In unity in diversity, तो सुनने के लिए अच्छा है. Hmm. But realistically, it is a little difficult to maintain peace in such हाँ, regions. like हाँ समझा. Implementation तो अच्छा, लेकिन take caring of the concept is very hard. Hmm. Right. Same thing with democracy on paper. Democracy on paper is such an excellent thing. Hmm. But when you apply it to a big country's population such as India, how much of a person, मतलब a person का कितना influence चल रहा है democracy पे वो देखो. Hmm. Because at the end of the day, you are electing somebody. That somebody is electing someone else, and that Hmm. someone else is appointing someone else as the president, prime हाँ. minister, वगैरह. Right? Hmm. तो उतना उतना इतना सब कुछ bureaucracy levels है. तो यहाँ Hmm. पे common man का कितना value है हमारा? Point. Hmm. Good. So So अभी start किया तो the triggering of the World War One is by assassinating the president. Who is it? Archduke of Austro-Hungary हाँ Empire, हाँ फ्रांस फर्डिनेंड बोल के एक बंदा है तो हाँ उसका assassination. हाँ. ओके, तो ठीक है, उसको एक नाम दे देते हैं, लाइक उतना प्रोनाउंसिएशन का इश्यू रहेगा मुझे, तो उसका एक नाम देते हैं रमेश. बोल दे किंग बोल दे बस. नहीं ठीक है, अच्छा रमेश. चलो रमेश. हाँ, रमेश. तो असैसिनेटर का नाम है कमलेश. ठीक है. तो ठीक है. रमेश रमेश एक प्रेसिडेंट है ऑस्ट्रियन हंगेरी का, और कमलेश ने रमेश को मार दिया फॉर सम रीजन, लाइक ही गॉट अ सुपारी, और ही वाज. नहीं नहीं, ओके. तो मेन मेन रीजन ये था कि एक कंट्री है सर्बिया बोल के, ओके. तो उनको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, उनको भी पावर ज्यादा चाहिए था. ओके. तो उनको लगा कि इस बंदे रमेश को मारने से इनको लगा कि उनको पावर मिलेगा, ओ, तो कमलेश को भेज के रमेश को मरवा दिया. अच्छा. ओके. ओके. टू मतलब हाँ. सर्बिया वांट टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ इज, आई मीन इटसेल्फ एज अ one nation or some. It wanted power. So it It want wanted power. okay, so they decided to kill our Ramesh. Hmm. So that led to a world war like type. Conflict. हाँ. World So War One. हाँ, ओके, रमेश को मारने से अभी वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, लाइक ऑस्ट्रियन हंगरी का प्रेसिडेंट See, को because मारने he से. was, हाँ. हाँ, so अभी उसके पास पावर था, वो हम्म. खुद तो एक किंग था ना, यस. तो उनके पास तो बहुत पावर होता है. हम्म. And he also has the power to represent Serbia if he wants to. हाँ. पर उसने वो नहीं किया. ओके. He doesn't want that because he doesn't think they are as मतलब equals देखते नहीं है ना. तो हम्म. एक टाइम में अगर ब्रिटिश इंडिया को कॉलोनाइज करता है तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोग इंडियंस को इक्वल की तरह देखेंगे क्या? हम्म. नहीं देखेंगे. हम्म. Similarly, कुछ ऐसी वजह से फ्रांस फर्डिनेंड मतलब रमेश, he didn't give equal representation or as much power as the Serbians did to Serbia. हम्म. So Serbians को obviously गुस्सा आया and they tried an assassination that went successful, which हम्म. caused war. तो सो बस यही था, फर्स्ट ओके, रीजन तो ये था. तो कैन वी से दैट सर्बिया से ही आया वर्ल्ड वॉर का आइडिया, लाइक to participate every नहीं, world in because this country. हाँ. no, it is wrong to blame Serbia for this reason because सर्बिया का तो बस एक ही प्लान था कि बंदे को मार देते हैं हमको पावर मिलेगी. हाँ. सो पर अभी what happened was not expected. सो अभी वो So रमेश it को is a मारने से chain अभी of कैसे हुआ. events. ओके, चेंज ऑफ इवेंट्स. सो समराइज कर सकते हैं लाइक इवेंट्स को, लाइक व्हाट हैपेंड दैट इवेंचुअली लेड टू अ वॉर.
Hmm. First, first off, there was already political instability in Balkan region. Okay. Second off, there was assassination of Ramesh. Huh. Assassination of Ramesh. So Hmm. that led to power dispute within that country. That is Austro-Hungary Empire. Huh. At the same time, the Ottoman Turkey Hmm. was oppressing other tinier countries in the region. So Hmm. all of these tinier countries wanted freedom. Okay. Meanwhile, there are bigger countries like Germany and France Hmm. that were in their colonizing phase. So Hmm. Germany was in unification phase, Hmm. while other countries like the Britain, UK, that is UK, and France were in the colonizing phase. So they were Hmm. newly militarized, newly industrialized countries, Hmm. and they wanted to colonize, Hmm. obviously, for more resources and such. Hmm. So that, and they saw how politically unstable Balkans was. Hmm. So they took the chance when they had it. So this entire region was politically unstable at that time because of the Ottoman Turks and the other Balkan countries fighting Hmm. and the assassination of this king. So all of this led to a lack of power in this place. So now Okay. these bigger countries saw a chance to मतलब हड़प लेने का chance देखे. Hmm. So they sent what मतलब they started to pick sides. कि Hmm. मैं इसको support करूंगा, ये इसको support करेगा. Hmm. Or eventually these big countries started fighting with each other. So that is what happened, and that eventually led to more colonies. ना मतलब पहले से colonies तो थे ही. Hmm. So these colonies were also involved in these wars. Hmm. मतलब वहां से soldier वगैरह या Hmm. तो wood और जो भी है वो सब वो कॉलोनी से लेके यूरोप लेके जाके वहां पे यूज कर रहे थे. Hmm. So that is one of the main reasons why Europe didn't see so much of a finance problem, financial crunch during Hmm. World War One. So yes, sir, and all of that fighting was going on, right? Hmm. So that eventually led to a war. Hmm. And after the war, they rebuilt it very quickly, if you think about it. Hmm. Because सारे पैसे तो कॉलोनीज से आए थे. Hmm. So कॉलोनीज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और यूरोप was तो flourishing. Hmm. So that is why they didn't see so much time in rebuilding themselves. Ah. If you think about it, the first assassination of this Ramesh was done in 1914, 14. Okay. and World War II ended in 1945. उनके Ah. बीच एक 4-5 साल का गैप है. So if you think about it, it's technically a continuation of World War One, but Hmm. with different parties. If you think about it, Hmm. so So this कंक्लूड what किया happened तो was हाँ कंक्लूड किया तो कमलेश ने रमेश को मारा ड्यू टू रमेश rejected the Serbia to identify himself as a country son. Okay, so that led to instability of ruling. So एक पॉलिटिकली stability in अनस्टेबल हो that गया. country. हाँ, so politically unstable हो गया, and the bigger country took the opportunity to take the control. So अभी तक इतना इवेंट्स हुआ है. That is not the only reason. Okay. नहीं, ये बाल्कन रीजन्स का मतलब बहुत इंपॉर्टेंस आएगा अभी. तो ये बाल्कन रीजन जो है वो टर्की के आसपास ग्रीस Okay. होता है. हाँ. ग्रीस. Okay. तो ये टर्की ग्रीस दिस एरिया हम्म. दिस एरिया को हम बाल्कन कहते हैं. हम्म. तो यहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी चलता है अभी भी वही मतलब बहुत झगड़ते हैं बंदे. Okay. So that is a very huge contributing factor because अभी हम वर्ल्ड वॉर वन देखे तो टर्की ऑटोमन टर्की was a huge मतलब had a huge impact in world war हम्म. on the other side. Allies के side में नहीं, other side. So what we will call them as powers. हम्म. So they had an influence. So we cannot ignore the role of Balkan region. हम्म. But yes, it is also because of the bigger countries wanting more resources, more land, more people under their control. हम्म. All of that. So So this is what led to World War One. okay, this led to a World War One. So World War One का time period क्या है? Like from where to where? Age, I mean year. So it started in 1941, as I said, with the assassination of हम्म. this Ramesh. हम्म. Wait, when did it end? हाँ. When did it end? It ended in 1921. 1931. Okay. It ended in 1921. 21. And then Okay. again, World War II started immediately. हाँ. So it. So World War II, when did it start? It started in 1939. So if you look at it, there was like barely any gap between World War One and हाँ. like It's like a 8 first. साल 10 साल हाँ. वैसे It's थे. like a movie में first half हो गया, अभी break लेंगे interval,
हाँ थोड़ा वही तो पॉपकॉर्न, इंटरवेंशन। हाँ पॉपकॉर्न पेप्सी पी लेंगे, चलो अभी नेक्स्ट सेकंड हाफ वर्ल्ड वॉर। एग्जैक्टली। सो ओके। तो ये पॉपकॉर्न पेप्सी यू कैन इमेजिन इट एज चेंजिंग ऑफ साइड्स। हाँ ओके ओके, हाँ ओके। चेंजिंग ऑफ साइड्स इन द मतलब कुछ सेंस। लोग इससे ना, हाँ। मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, अभी ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर जो था, हम्म। they became under the control of Germany. पहले हाँ तो जर्मनी का नाम ही नहीं था वहां पे। ओके। So what happened in World War One was that Germany was a part of this Austro-Hungarian Empire, हम्म। right? And they got a bad end of the, मतलब वर्ल्ड वॉर वन के एंड में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बोल के एक लिखवाए थे, जो हम्म। भी विन हुए, so they all made the country of Germany sign something called Treaty of Versailles. ओके। So Versailles is a place in France. तो वहां पे ये ट्रीटी साइन किया गया था एंड दैट स्टेटेड कि जर्मनी का मिलिट्री बस छोटा सा रहेगा, हम्म। एंड उनका ये जो भी गन्स है वो बना नहीं सकते, और हम्म। ये सारे सारे कंट्रीज जो भी अफेक्टेड हुए वॉर से इनको इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, हम्म। और जो भी लैंड फ्रांस ने कब्जा किया है, मतलब कब्जा नहीं, वॉर में जीता है, वो हम्म। फ्रांस ही रखेगा, तो जर्मनी को वापस नहीं मिलेगा, इससे कुछ कंडीशंस थे ओके। that Germany wasn't very keen on, but they had to accept because they lost the war. हम्म। So as we all know, जो भी हारता है उनको तो मानना ही पड़ता है, whether they like it or हाँ। not, they have to take the bad end of the stick. हम्म। So that was in Germany. All of this is World War One. हम्म। So the aftermath of World War One, people in Germany were very disappointed with the Treaty of Versailles. हम्म। The German money, it is called marks. ओके। It became worse. मतलब उनको तो वैल्यू नहीं था कि टिश्यू पेपर से भी कम वैल्यू था उसका. ओके, डिग्रेडेड। So हम्म। हाँ, तो मतलब इकोनॉमी एकदम खराब चल रहा था उनका. हम्म। And that is when Hitler promised a better future. हम्म। And he showed that he can be strong enough to resist support, or not support, he can resist pressure हम्म। from countries like USA, France, UK, all of these हम्म। that were involved in the Allies side of the Treaty of Versailles. So he became the So support and the he basically, guardian. हाँ, लाइक मैं uh, संभालूंगा, रुको गाइस, आई विल he हैंडल इट, लाइक उसने वैसा किया। he showed what Germany could be to them, हम्म। and people got carried away. But what we have to keep in mind is that he was not voted to power. He took power. He didn't ओह get voted to power. ओके ओके, ही Yeah. क्रिएटेड Hitler his was own not voted to power. opportunity. ओके ओके। हम्म। Yeah, he found his opportunity and हम्म। he used the best of it. ओके। So he made the other communities like socialist थे, communist थे, और हम्म। ये बंदा तो अपने आप को नाजी stands for National Socialist Workers Party, but हम्म। there was nothing socialist or communist, nothing हम्म। about it. They were just nationalists in the लाइक sense एन German एडवर्टाइजमेंट, nationalism. हाँ एडवर्टाइजमेंट, लाइक ये कर हाँ, सकूंगा। कुछ ऐसा ही समझ गए. हाँ। It feels like they are working for the people, but if हम्म। you think about it, they were working for power, हम्म। which at the end of the day, every political party is doing. हम्म। So they hated communist people, so they killed every communist that they could find in their country. हम्म। They hated democracy, so they took power and they destroyed democracy. हम्म। And that's when they started, systematically executing the people that they don't like. हाँ। So that सो is what happened in World War II. ओके, मुझे जो आइडिया है वो सब, एक होता है कम्युनिज्म, एक होता है कैपिटलिज्म, और कोई इजम्स है लाइक अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन, हिंदुइज्म, ये सब छोड़ के, लाइक कैपिटलिज्म कॉर्नल। Fascism, fascism, authoritarianism, fascism. फासिज्म, ओके। हाँ। Authoritarianism, ओके monarchy. ओके, लेट मी। These are not forms of government. These are forms of government. Huh. सो लेट मी अंडरस्टैंड दीज So अभी इजम्स। कांग्रेस का तो लाइव एग्जांपल. सो कॉर्नल इज एक, तो एक तो कम्युनिज्म. हाँ कम्युनिज्म, व्हाट इज फर्स्ट इज कम्युनिज्म? कम्युनिज्म. कम्युनिज्म. सो So it is based on the principle of Karl Marx. तो उनका एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बोल के एक है book. So it is all about the workers' rights बोल के है. मतलब on the paper it looks very beautiful, but in reality it's not very practical. Same thing. Same thing with like you say ideal democracy. Right? टाइम, हाँ ओके। Ideal democracy looks very nice, but if implementing it on a large scale is very difficult. सो तो अभी कम्युनिज्म मीन्स, कम्युनिज्म में क्या है? It is all हाँ about the workers, by the workers, for the workers. ओके। So they want equal wealth distribution. They don't want any rich person to be there. They want everyone to be हाँ। on an equal level. And government subsidies वगैरह. जस्ट अ If मिनट, you're a worker with so हाँ many kids, मतलब समझ लो चार पांच. हाँ, सॉरी जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ सर, हाँ हाँ कर रहा हूँ।
अभी पता नहीं आ रहा है क्या? आर यू ज्वाइनिंग? डन डन, नो प्रॉब्लम। हाँ, डन डन डन, तू कर ले। सॉरी। हाँ, सो कम्युनिज्म इज So I was saying it was about the workers, हाँ, सो workers' द powers. लो लेवल पीपल इज द मेन प्रायोरिटी देयर टूडे। लाइक उनको नीचे नहीं रखना Yeah, है, उनको भी लेके basically. आना है ऊपर। और ऊपर रखना नहीं है, ऊपर वाले को नीचे सबको खींचना है। एक साथ ऊपर आना है. So that is हाँ, तो वही सब। ऊपर वाले को नीचे नहीं खींचना है. That is not what they are saying. They say हाँ everyone wants to be up there. हाँ, ओके। सो नाउ व्हाट इज So कैपिटलिज्म? that is one thing. हम्म। Capitalism, the live example that we see of capitalism is, in fact, I would say China is a better capitalist country, ओके। and even US. Although it sounds very ironic to me about how China, the communist country, है तो सबको पता है. हम्म। But if you look at their markets, capitalism is defined by the markets, not the type of government or the type of the way they're running it. हम्म। So capitalism is all about free markets. हम्म। So communism में कैसा चलता है कि एक फैक्ट्री है और एक ही फैक्ट्री है हम्म। और उसको मोनोपोली है बेसिकली हम्म। और सबको वही देता रहता है. हम्म। So this monopoly is there. हम्म। अब अभी कैपिटलिज्म में देखोगे तो ये मोनोपोली नहीं है. हम्म। So there are multiple companies fighting for the same product. So ओके। at the end, the consumer is getting benefited, and the हम्म। capitalist person is getting money. हम्म। So obviously, everyone wants money, right? या। So there is more competition, there is more consumerism. हम्म। So people have more options. हाँ, पीपल हैव मोर If you ऑप्शंस, think ओके। about it. हम्म। But the one problem that comes with capitalism is that because you might find another person who works for $10, the next person might work for $4. So obviously you hire the $4 person. No? ज़्यादा या। पैसे क्यों? हाँ हाँ हाँ। That is one of the main reasons you can see outsourcing your jobs also into other Asian हम्म। countries, right? That's because they will accept lower salaries for the same amount. हम्म। So that is one problem with uh, capitalism. It is that the lowest bidder will get to do the work. हाँ, इट्स लाइक अ So मार्केट that might एंड द लोएस्ट necessarily वन विंस। it might mean that the quality. हाँ, हाँ। हाँ. ओके। तो लोएस्ट बिडर will win. अगर कभी गवर्नमेंट का टेंडर है सोच लो. हम्म। हम मेट्रो बनाएंगे सोच लो. हम्म। So one fellow quotes $1 million. हम्म। Other fellow will quote $100,000. हम्म। Unrealistic numbers here, but हम्म। guess who will get the tender? ओके। So because the lower, so you can see that capitalism is driven by money and consumerism. हम्म। So it is all about free markets. ओके। So सो अभी गवर्नमेंट का जितना कम कंट्रोल है मार्केट पे, that much capitalist a country is. So I'm saying China is capitalist. You're saying how? So हम्म। because you look at China, they have so many companies, हम्म। and government obviously doesn't support all the companies. हम्म। It means they are fighting in the same market for the same products, हम्म। and the consumer chooses which product he wants, and that ultimately will be on the top. हम्म। Right? So that if you look at it in that way, it is a capitalist country. But ओके। if you look at the way our country is being run, it is communist country. सो इन So that वर्ल्ड is वॉर वन। communism हाँ and capitalism. हाँ, Hmm. इन द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, कौन सा इज्म था? लाइक व्हाट शुड आई फॉलो? लाइक So coming to World War One, there are mostly first is as I said, the first one is communism. ओके। एक तो communism है, हम्म। दूसरा तो capitalism है, हम्म। and the third thing is called fascism. ओके, एक्सप्लेन इट। Fascism is like one man, one party, absolute power. हम्म। अभी if you think about communism, it's like work as I told you, नीचे वाले लोगों को भी equal representation देना है, सबको बांट देना है. हम्म। So like if there's a 1 acre of land, everybody gets equal amounts of land. कुछ ऐसा है. डन। But fascism is like this one person is there at the top हम्म। and he controls everything. ओके, इट्स And किंगशिप। however he wants, he will distribute. He doesn't have to distribute. ओके। It's like kingship but more absolute. मोर। मतलब किंग के कोर्ट में तो मंत्री वगैरह वगैरह होते हैं ना. हम्म। मंत्री मंत्री ओके, मंत्री, हाँ, सॉरी। वो सब मतलब हम्म। they'll have ministers and all the other people in the monarchy, right? हम्म। This thing is not there in fascism. हम्म। Fascism is like the absolute will of this person on the top. ओके। And मतलब उनका भी एक organization जैसा होता है. So it can be हम्म। one person or one group that is controlling the entire place. So उनके मतलब how they want, that's how things will run. हम्म। So
when it comes to monarchy, you have advisors to the king. You have Hmm. people paying taxes and all to the king, and the Hmm. kings will do things in return for the people. So Hmm. ऐसा कुछ चलता है monarchy. हाँ. But fascism में what happens is the absolute will of the party that is controlling or the person on the top. It's Hmm. like so it's like an absolute. If you oppose them, you are no. Hmm. So So it's it's like that. a personal question. Fascism is an absolute form. A personal question is, which Hmm. ism do you support? Like, if given the three options, like communism, capitalism, and fascism, which one do you support it? Hmm. Like, I am asking this question to your demon side. Like, वो एक राक्षस रहता ना कि भाई आज एक थॉट आता है कि लाइक चल आज बंक मारते कॉलेज, तो वो राक्षस बोलते चलो कर ही लेते हैं. लाइक इट्स लाइक अ ट्रू You're वाइल्ड. asking हाँ. about हाँ. if हाँ. there was no morals, हाँ. anything, what would you support your asking? हाँ. Huh? हाँ. So The if I am the person on the top, I would personally choose fascism. सबको मेरे बारे में चलेगा. हाँ. So हाँ. Okay. But if I am not the person on the top, Hmm. then I would choose capitalism. Capitalism. Okay. Cool. All of these three things are absolutely terrible. You know, Hmm. all of these things are absolutely terrible. So you look at the US का health market right now. तो Hmm. आप एक सर्जरी के लिए जाओ तो they'll be like $30,000. Hmm. That is not a payable amount for one surgery, boss. Hmm. The same thing you go to a country like UK. That is Hmm. also a capitalistic country, Hmm. but they have nationalized healthcare. तो अभी Hmm. आप एक बोन तोड़ के वहाँ पे जाओ तो हड्डी they'll fix the हड्डी. Like, it's practically free. Hmm. Why is it so? Because there's something of socialism that works with it. Hmm. So socialism is basically for the welfare of everyone. So all the taxes that you are paying will go to the government, and the government will invest in these places where everybody can use commonly. Hmm. Capitalism is like government So has no control over the market. when So you some mention, money huh. goes to the company. So when you mentioned about, Communism, there is no company. okay, okay, socialism is there's a company, communism is there is no company, capitalism is a market kind of situation, and fascism is a kingship. It's a, if you summarize these all, not going deeply, but if I'm summarizing these, so these are the things. I have four question. One second. Hmm. So I'll tell it in simple words. So Hmm. one thing is communism. So Hmm. communism is like there is only one company that is controlled by the government, and the Hmm. government works for the people types. That is Okay. on paper. Paper तो सब अच्छा ही लगता है, लेकिन Hmm. in reality कोई अच्छा नहीं है. Done. Okay. Capitalism is like government पे मतलब has no control over the market. Market पे तो कोई control नहीं है. Hmm. तो एक चार पांच कंपनी है, उनके पास पैसे हैं, वर्कर्स हैं, तो Hmm. they don't have to fairly compensate the workers also. Hmm. So आपने तो सुना ही होगा चाइना में child labor. Hmm. So that is a very much reality when it comes to capitalism. Hmm. The lowest bidder wins. तो Hmm. यहाँ के बच्चों को तो पैसे ही नहीं दे रहे. तो सब Hmm. बच्चे इस तरह खाई जा रहे हैं ना. Hmm. Why Hmm. would you hire somebody that is asking for money Yeah, I when understood. you can get it done for free, Hmm. right? So that is one truth about capitalism that nobody likes. Hmm. So when we come to the World War, the thing, countries followed different isms, right? You mentioned different countries follows different concepts. Hello? Connection was bad on my side. Okay, okay, no problem. Uh, so Ha. In the if we take the concept of in the World War topic, different countries follows different concepts like the communism, capitalism, or fascism. forms are going. So there are Right, mainly right. two, mainly two countries like दो दो लोग हैं. So A and B समझ लो. A में it's an Hungary and कौन सा था Austria Hungary, and what is the B part which they are opposing? Big part as you can say US, UK, Okay, France. US UK. So are there any two different concepts they are using like UK? US, UK, France. Okay, US UK France follows which ism? They follow capitalism to an extent Okay. because absolute capitalism is not followed anyway. Okay, and the Austria Hungary side?
Which ism they used to use? They were monarchy and fascism. Okay, monarchy and fascism. So it's like a Monarchy. okay, it's like a battle So between in two USSR, ism. Okay, huh. Yeah, continue. and you can think of USSR, which Hmm. was on the Allies side. Hmm. USSR was on the Allies side. Hmm. Something called uh, I don't know if you heard of it, but there's something called as SAR, TSAR. Okay. So these guys were basically they were almost like monarchy only Hmm. in Russia, USSR. Hmm. So it was a pinch of communism and a pinch of monarchy that was going on that time. Because Hmm. that time the monarchy was being absolutely destroyed by communism because everyone wanted workers' rights. Hmm. So communism was the better, not better, but Hmm. communism was more chosen over people than the Tsar and the monarchy basically. Hmm. So that was also there. So you can say that they were a battle between different forms of Hmm. Hmm. markets and governments. Ah. But So the main idea boils down to power. Everyone wants power. power. Okay, that I understood. Okay, cool. So अभी generalize करते हैं. Total complete zero. Let's recollect what we understood. So Kamlesh ने रमेश को मारा. That led to Right. political instability. Uh, Right. and everybody, the other big countries want to control this or to be Okay. take control. So तभी एक war, I mean that led to a war. The war happened Yes. between 19 to which one 1914 or 14. 37? 1914 to 1930. 14 to 21. 31. Okay, 31. 1914 to 1930. So इतना And wait, I'm not sure. 1 second. हाँ, no problem. 1914 to 1921. Okay, 1921. Yeah. So कितना 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. So 8 years. So there was an 8 years of continuous war. Yes, yes, that was right. Okay, 8 years of continuous war. And अभी reasons are कौन सा the want of power and conflict And of it was the time of colonialism. conflict of Conflict of interest. interest. That Correct. one uses capitalism or a pinch of monarchy and other uses which one fascism or a kingship. In general, there was also racism. Racism Racism itself. too, it's हाँ, okay, वो but तो है ही है. I like the racism to a certain limit. Like I like to kind of, I'm a kind of bit racist. Like a pinch of racist is still inside me, and I appreciate and I Everyone is a acknowledge. little racist. I acknowledge it. Like See, the problem arises when you don't acknowledge it and when you still say I am not, but then you proceed to go and bash the other हाँ party. yeah. Hmm. सो इतना इतना तक कंप्लीट क्लियर हो गया. सो अभी 8 years ऑफ वॉर हुआ एंड Same. अभी समझ लो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. सो दो लोग झगड़ने आ गए. एक ग्राउंड, एक बड़ा सा ग्राउंड है Hmm. और दो लोग झगड़ने आ गए. सो Okay. ऑब्वियसली देयर आर टू टीम्स. द फर्स्ट द मेन कैप्टन्स आर ऑस्ट्रियन हंगेरी ऑन द फर्स्ट साइड एंड द अदर साइड हु इज द कैप्टन. Hmm. See, the problem with this question is that you can't really determine which. Because in the winning time, most of the people will say US had the entire place in the war. Same thing with World War One, same thing with World War. But if you look at who contributed or who were there in the beginning, you can say UK was there, France was there, to an extent even USSR was there. So I wouldn't say if there's any captain or not because these countries have to work together to defeat their common enemy. So okay, So everyone have instead of 1v1 there is 1v3 or 1vn type. yeah, basically. So उंगली किसने की? Like who started? Like ले मार अभी वैसा टाइप. Who उंगली किसने किया इन दोनों में से? Countries say you can't determine because they were just picking sides. The problem started with the tiny countries fighting with each other. That eventually led to bigger countries joining the smaller countries' fights. So if you think about it,
it could have been that way in the Sri Lankan Civil War. India was playing a part in Sri Lankan Civil War by supporting the Sri Lankan government, right, Mm-hmm. against the LTTE. Mm-hmm. So, if you think about it, what if India started supporting LTTE instead of Sri Lanka? Then some other countries like Pakistan, China would have started supporting Sri Lanka, and that would have been an entire chaos in that region, right? Something similar has happened, but on a way bigger scale in Europe, in the Balkan region. Mm-hmm. So you can't really say who threw the first punch. Mm-hmm. तो ऐसे बोल नहीं सकते but what we do know is that because of the political unrest it is very easy to start wars to ignite any kind of conflict between people. हाँ, अच्छा ठीक है। तो पत्थर किसने फेंका वो आइडिया नहीं है, लेकिन Determine करंट, करना हाँ, मुश्किल है. सो करंटली देयर इज अ ग्राउंड एंड दीज आर द मेन कैप्टन्स एंड दे आर काइंड ऑफ प्लेइंग अ गेम, लाइक हु विंस द गेम। सो अभी Yes. दो साइड है, तो कैप्टन दो है, लाइक 1v और n। सो दो नेम भी रहेगा अलग अलग टीम के लिए। Right. सो द ऑस्ट्रिया हंगेरिया साइड, उनका क्या नेम है? व्हाट्स द नेम, like their side? One second. Hmm. Wait. I think they were called. One second. I have to search that. Hmm. So in between, there's another co-host, Sat Nikam, in the meeting, in the podcast. He joined. Hello. Hello, Nihar. Hello. Hello. Can you show your beautiful face, Nikam? Just give me a minute. Hmm. Hey, you continue. Yeah. So, ठीक है. What was it? Yeah, so the countries that were fighting in World War One, they were basically divided into two flanks, as I told, right? Yeah. So the two divisions, one तो allies है, दूसरा Allies. तो उनको हाँ, दूसरा को हम central powers कहते हैं. Central powers. Okay. Powers. हाँ. So इसमें से मतलब ऑस्ट्रिया हंगेरी है और ऑटोमन टर्की है, ये सब आते हैं. वही अगर आप वर्ल्ड वॉर टू में देखोगे तो यू कैन सी दैट दीस कंट्रीज आर allies and the axis. Okay. So the Axis first, में सिर्फ three countries है basically. so first World War, there are two teams. One is allies and one is central powers. So कौन सा allies में तो वो यूके फ्रांस ये सब आएंगे. Am I correct? हाँ. So the central power side कौन है? ऑस्ट्रिया. Central powers में you'll find Germany, Austria, Hungary, Turkey वगैरह. These countries were in central powers. That and the areas that they ruled will eventually come into central powers. The same way when you say allies and you say Britain, technically India was a part of Britain Empire that time. So technically India was allies. हाँ. So इतना. So same way. हाँ. So Sarth, when you missed, so the topics we covered are हाँ. So ये वॉर जो गेम खेला है लोग ने, so ये छेड़ा किसने? Like what triggered the World War One? So the main point is कमलेश ने रमेश को मारा. Correct. हाँ. रमेश को मार दिया. And the Austria-Hungary president is Ramesh. So due to the demise of Ramesh, it became politically unstable. Correct. So that became an opportunity for other big countries to take control of the capture this place. Correct. So kindly this led to a World War One. And the other part is we discussed about the concepts of capitalism, colonialism, and colonization, and communism, and fascism. Okay. So when we differentiate or categorize, Austria-Hungary side, they follows fascism, like a kingmanship, monarchy, and and the other side they follow capitalism and a pinch of what? And a pinch of monarchy, right? Capitalism and communism both, because And Russia communism, okay. was technically Russia is almost a monarchy type, communism type चल रहा था उनका. मतलब उनका तो खुद का एक civil war चल रहा था. There was something called SAR, TSAR. So they were monarchies and they were being fought by the communists. So उनका भी वहाँ पे चल रहा था.
So you can say it's the pinch of communism and capitalism both. सो ठीक है, तो अभी क्या हुआ, रमेश ने सॉरी कमलेश ने रमेश को मार दिया। सो अभी क्या हुआ है, एक स्टेडियम बन गया, एक बड़ा सा ग्राउंड, जिसमें इधर ऑस्ट्रिया हंगेरी खड़ा है और इधर अलाइज खड़ा है, लाइक यूके, फ्रांस और दीज कंट्रीज। तो अभी इन दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, लाइक वॉर इन द सेंस ऑफ, सिंप्लीफाई किया तो एक गेम चल रहा है दोनों के बीच में। और एक गेम का टाइम पीरियड है 1914 टू 1921। सो देयर इज एन 8 years ऑफ एक गेम था। तो 8 years ऑफ गेम, कंटिन्यूअस वॉर, एंड दो टीम है, और एक टीम का नाम अलाइज, एक टीम का नाम सेंट्रल पावर। सो ये दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। सो दिस इज द वर्ल्ड वॉर 1, and who lost is the Austria-Hungary part, like Central Powers lost. And In both world wars, it is the same. Allies always win, हाँ, and सो इसमें से एक पता चला कि वो कौन सा अभी, हाँ डन, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ, और ये दिस ऑस्ट्रिया हंगरी पार्ट द सेंट्रल पावर लॉस्ट, एंड दिस कंट्री हैज टू रीपे द लॉस विच दे, हाँ, विच दे क्रिएट। correct. सो ये सब चल रहा था, और बीच में द वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड विच ईयर, कौन सा वर्ल्ड After 19, 19 हाँ यार, 1914 तक तो शायद वर्ल्ड वॉर वन ही चालू था। 19 21 तक, 21 तक तो वर्ल्ड वॉर 1 चालू था। हाँ करेक्ट, ओके, हाँ, 1939 it started. ओके, yeah, correct, 1930। correct. हाँ, सो Because Hiroshima Nagasaki incident happened in 1945 something. हाँ, So Exactly. correct. सो 1930 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट। 1939, almost 1940 something. हाँ, सो स्टार्ट, ओके, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कब हुआ? 1939. 1939। World War One, हाँ, World War 1921 को खत्म. हम्म, So in like there was around 10 years of gap in between. हम्म, 10 to 10-20 years of gap. ओके। सो आई अंडरस्टूड इट एज ए मूवी टाइप, एक फर्स्ट हाफ देख लिया, वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, कांड हो गया, अभी थोड़ा चिल मारते, पॉपकॉर्न पेप्सी पीते, थोड़ा सेटल होते, फिर सेकंड शो के लिए स्टार्ट करते, लाइक आफ्टर इंटरवल। सो You can तो think of it like हाँ, तो सार्थ, if I ask you to review the whole movie, World War 1 and World War 2, what is your review? Hmm. Okay. I'm just So asking, like without any context, I just want to know. yeah, so फर्स्ट मैं वर्ल्ड वॉर वन से स्टार्ट करता हूँ। तो वर्ल्ड वॉर वन में जैसे हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि इट्स ऑल अबाउट कि Answer it like you are reviewing a movie, like मसाला था इसमें, इसमें अच्छा सॉन्ग्स था, इसमें अच्छा गाने था, like इसमें लोग इतने मरे, तो वैसा टाइप, like answer it in a review way. ओके हाँ, हम्म, सो ठीक है। तो पहला वर्ल्ड वॉर जो था हाँ, उसमें ऐसा था कि ऐसा समझ लो कि पूरा बॉलीवुड का सब खतरनाक एक्टर एक साथ आ गया, और हम्म, फिर कौन ज्यादा चमकने का कोशिश कर रहा है वो ट्राई कर रहे हैं। ओ, ठीक है, ओके, हाँ, लाइक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन किसको मिल रहा है, हम्म, ये चालू। और जो जो छोटे छोटे एक्टर्स है वो किसी एक को आइडल मानना चाहते हैं, बट वो जो मेन बड़ा आइडल है वो अभी तक मिला नहीं वर्ल्ड। हम्म, तो और उसमें जैसे दो टाइप के लोग या फिर डिविजन्स हो गए, जिसमें एक ऐसा था कि जो बहुत मेहनत करके प्रॉपर एक्टिंग करके आगे चल रहा हम्म, है, एक पैसा खिला के चल रहा है, ऐसा बोल हाँ, सकते हैं। ओके, तो वैसा हो रहा था। हम्म, तो वही कि हर एक्टर का ड्रीम यही था कि भाई मैं कुछ भी करके बड़ा बनूं। हाँ, सो मेन तो यही है। तो जो जैसे हम बोल सकते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर या फिर जर्मनी का जो भी ड्रीम था कि अब टू हम्म, टेक ओवर द वर्ल्ड एंड कॉन्कर हम्म, एवरीथिंग, हम्म, सो वही हो गया। हम्म, एंड फिर ऐसा हो गया कि एकदम शिखर पे पहुंच गया, बहुत बड़ा बन गया, और फिर हम्म, अचानक से कोई हॉलीवुड का एक्टर आ गया बीच में, ओके, बॉलीवुड में। हाँ, मैं यूएस हाँ, यूएस हो गया, और फिर यूएस ने एक अच्छा खासा मतलब स्मॉल स्केल एक्टर्स को बूस्ट दे दिया, हम्म, और फिर ये जो ऑलरेडी बड़े बड़े बने हुए स्टार्स थे वो सब गिर गए, हम्म, और फिर सबको
लाइक उनका सेकंड इनिंग्स लाइफ का जीने के लिए पैसा चाहिए अभी, और हम्म जो उनका है नहीं, और वो लोग इनसे लोन ले रहे हैं, बस हम्म यही है। So, okay. So, according to Nihar, what's the review on the movie World War? तो तो I'll say कि फर्स्ट हाफ में जो है थोड़ा सा ऐसा ही बिल्डअप करते जा रहे हैं, Hmm. मतलब छोटे मोटे फाइटिंग हो रहे हैं, क्योंकि जब you think about it, वर्ल्ड वॉर वन के डेथ्स और वर्ल्ड वॉर टू के डेथ्स कंपेयर करेंगे तो यू सी there's way more deaths in World War II. Okay. World War II had a lot more technology involved than Hmm. World War One. A Hmm. lot of our modern day technology is based on the World War Two one. Hmm. So a lot of inventions that came out of necessities we use in our everyday lives. Hmm. So I'd say कि मतलब पहले छोटा सा ऐसे स्लाइटली ऊपर लेके जा रहे थे Hmm. और फिर इंटरवल देते हैं, उसके Hmm. बाद क्लाइमैक्स और एंडिंग आ गया. Hmm. So I would say that the World War Two is the peak of the movie, Okay. या फिर and और World War भी One is थोड़ा just एक the beginning part of it. The एक pre-climax ऐड is the करना masala चाहूंगा, one. Like pre-climax में बहुत कुछ हो गया और एक smaller tone में end हुआ वैसा टाइप. World War और एक One ऐड मतलब करना ऐसे चाहूंगा मैं Okay. कि वर्ल्ड वॉर वन इज लाइक अ नॉर्मल 2D मूवी, हाँ. क्रिस्टोफर नोलन नॉर्मल बनाया, Oh, अच्छा okay. और टू इज IMAX हाँ. कंप्लीट. Like it's सो like अचानक से वर्ल्ड वॉर टू में 3D ग्लासेस पहन लिया और अचानक से एकदम पास में दिख रहा है सब. Like massive. Okay. Oh, this is an interesting one. World War One is a 2D. World War Two is a 3D. Cool. So actually meeting end हो रहा है less than 1 minute. हाँ. So comparison भी हो गया. Like lightly थोड़ा simplify किया मैंने वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू को like मूवी से कंपेयर करके. गलत है लेकिन like to understand to me I compare it with what I like. So वैसा कंपेयर किया and conclusion भी मिल गया. So Sir, do you want to add any questions or do you want to share your answers? You can. पहले तो मेरे को ये बता, तो उन्होंने सिर्फ वर्ल्ड वॉर वन डिस्कस किया, टू भी किया? जस्ट वन किया है. वन भी थोड़ा बहुत थोड़ा सा स्क्रैच किया और समझ में आया कि वर्ल्ड वॉर हुआ क्या, लाइक व्हाई डिड हैपन. वर्ल्ड वॉर होता क्या है, उसमें हुआ क्या है. हाँ बस इतना ही. वी डिडंट डिस्कस अबाउट वर्ल्ड वॉर टू. वर्ल्ड वॉर टू में स्पेसिफिक्स तो हमने बात नहीं किया. लाइक एज यू सेड इट्स लाइक फुल ऑफ मसाला थिंग. लाइक द हिटलर थिंग, the वर्ल्ड वॉर holocaust, टू इज the holocaust thing and the main thing of the Hiroshima bomb. वो प्री क्लाइमेक्स में बहुत मसाला है. सो वी केप्ट इट एज अ हिडन पार्ट. We will discuss about it if Nihar or you बिल्कुल have बिल्कुल. time. So you have time, हाँ हाँ भाई बिल्कुल. you can discuss. हाँ हाँ टाइम है, बात कर Cool. सकते हैं. Sarth, is it okay? यस यस. या इट्स फाइन. Done. Let's continue with World War. Sorry, previously World War One. If you want to share your thoughts. Hmm. कुछ नहीं, अभी फिलहाल तो जर्मनी पूरा डूब चुका है, Hmm. बहुत ज्यादा पैसा उनको भरने का है. फाइनल मॉरल ऑफ द स्टोरी वर्ल्ड वॉर वन का यही है कि जो भी सेंट्रल पावर्स थे उनकी वाट लग चुकी है, और अभी उनको ऐसा है कि ये फैक्ट मैंने कोई वीडियो में देखा था शायद, कि नॉर्मल ब्रेड जो कुछ नॉर्मल 10 यूरो वगैरह में मिलता था, इट Hmm. वेंट टू मिलियंस Okay. आफ्टर वर्ल्ड वॉर. पूरा इन्फ्लेशन बढ़ गया था. Hmm. सो देवर लाइक कि देवर नाउ पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द अलाइज, Hmm. कि जो वो लोग बोलते थे करेक्ट. वो उनको मानना पड़ता था. Hmm. देवर फोर्स टू साइन ट्रीटीज वगैरह, Hmm. एंड मतलब उससे उनको फायदा हो रहा था, बट ज्यादा फायदा अलाइज को ही हो रहा था. Hmm. तो वैसे वैसे तुम लोगों ने ये सब बात किया कि नहीं, वर्ल्ड वॉर वन में ट्रिपल एंटेंटे, ट्रिपल मतलब ये ट्रीटीज थे दो तीन. Hmm. No, you continue. Like बताते जा. Like it's okay. हाँ नहीं तो फिर वही तो ये कुछ ऐसे ट्रीटीज थे जो वर्ल्ड वॉर वन में साइन हुए थे, You are कि talking मतलब कि post the war is pre-war, like treaties. Post. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वॉर वन प्री प्री. Okay. Hmm. हाँ, सो वर्ल्ड वॉर वन में जब चालू होने से पहले ऐसे कुछ ट्रीटीज थे Hmm. जिसमें कुछ कंट्रीज ने साइन किया था कि हम पीस में रहेंगे, Hmm. और बाकी कोई भी अटैक करेगा या कुछ भी करेगा या फिर कुछ ट्रेड इम्प्लीकेशंस डालेगा वगैरह, Hmm. तो हम डिस्कस करके, हम आपस में डिस्कस करके उसको फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंट डिसीजन कोई लेगा. Hmm. तो वैसा था. So तो ये सब it's this treaty is like a rules, like प्रोटोकॉल्स. players मैदान में आ गए, like ग्राउंड में खड़े हो गए.
अंपायर आके एक रूल्स बता रहे कि भाई ये है, अगर पीसफुली करना है तो खत्म कर सकते हैं मैच, अगर नहीं करना है तो चालू कर सकते हैं, वैसे टॉस ऊपर मार के चालू। नहीं नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। ओके, इट्स नॉट। नहीं मतलब इट मोर देन रूल्स, आई वुड कॉल इट मतलब एन एग्रीमेंट मोर देन रूल्स। करेक्ट, मतलब हम एग्रीमेंटेड। सब कलेक्टिवली यही करेंगे बोल के। हम्म। तो हाँ। इट्स नॉट लाइक ये सबको ऐसे ही करना है। इट इज एन हम्म। एग्रीमेंट कि हम सब ऐसे ही करेंगे। हाँ। सो लेट अस से कि किसी को वॉर थ्रेट आया, मतलब यू कैन टेक एन अलायंस ऑफ लाइक अभी नेटो समझ लो। तो हम्म। एक भी नेटो को कंट्री को वॉर का थ्रेट आया तो सारे नेटो कंट्रीज आके उस एक कंट्री को दबा देंगे। सॉरी, इट इज लाइक व्हाट एन इज एग्रीमेंट। नेटो? व्हाट इज नेटो कंट्रीज? NATO is अभी it's a collection of US and other North Atlantic countries. North Atlantic region में काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। हम्म। तो उन सबको मिला के यूएस ने एक अलायंस बनाया है, नेटो मिलिट्री अलायंस। ओके। तो अगर लेट अस से पोलैंड एज एन एग्जांपल, अभी रशिया का यूक्रेन के साथ वॉर चल रहा है ना। हम्म। So Ukraine desperately wants to join NATO हम्म। क्योंकि if they do join NATO, हम्म। उनको यूएस का प्रोटेक्शन मिलेगा और बाकी सारे नेटो कंट्रीज का प्रोटेक्शन मिलेगा। हम्म। So it is an organization, it is a North Atlantic Treaty Organization, NAT, North Atlantic Treaty Organization. हम्म। So it's like a military alliance है ये। तो अगर एक भी इनमें से इन सारी कंट्रीज में अगर एक भी कंट्री को रशिया ने थ्रेट किया या किसी ने थ्रेट किया, तो ये सारी कंट्रीज एक ही बार मिलके रशिया को दबा देंगे। तो वो हम्म। कैसा है? So it is like an alliance, हम्म। it is an agreement. So no matter which country gets threatened in that treaty, हम्म। everyone will come and protect that country. ठीक है सर? सॉरी बेसिकली टू। अभी हाँ। हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो फॉलो करना पड़ता है, या फिर लॉयर्स भी जब केस लड़ते हैं तो दे रिफर टू दोज पॉइंट्स और आर्टिकल्स दैट आर बीइंग मेंशन्ड। हम्म। सो ये ट्रीटी में ऐसा ही होता है कि जो लिखा मतलब वो डिस्कस करते हैं साथ में बैठकर, एक फाइनल स्टेटमेंट बनाते हैं, असर्शन करते हैं कि हम यही करेंगे, हम्म। एंड फिर वही फॉलो होता है। ओके। और अगर कोई ट्रीटी ब्रेक करता है तो सीधा उस पर एक्शन लेते हैं, मतलब जो भी मेंबर पनिशमेंट कंट्रीज। और अ फाइन, यू हैव टू करेक्ट, हाँ, पेनल्टी। bear the consequences. Okay, I quickly Correct. want to detour this topic and ask Nihar that what made the history interesting to you? Like, मुझे इसमें I want to spend my more time on history. So, what what is the driven thing? So the first time I was into history मतलब एनसीईआरटी के बुक से ही देखा था। Hmm. तब मैंने कहा अच्छा ये सब क्या है यार, डेट्स वेट्स बॉटल बॉक्स से बैटल ऑफ गैलेक्सी सब क्या है यार। Hmm. तो आई थॉट ओके, I'll forget the dates, I'll Hmm. look at the events. So Okay. मतलब you can look at history as a story line। मतलब Hmm. मैं हिस्ट्री को स्टोरी की तरह पढ़ रहा था। Hmm. So the story started with early humans, ऐसे यहाँ पे आए, अफ्रीका से इमिग्रेट हुए, इंडिया Hmm. को आए, world में spread हुई। So you can think of it like a storyline. So instead of reading it like इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे ये हुआ, Hmm. if you look at it like in sequence of events, you'll find it way more interesting. Hmm. And especially when you don't know the stretch of the examinations, if you do it on your own, मतलब जाके अगर you spend your own invest your own time into that thing, you'll find it interesting because you don't have the stress of exams, you Hmm. don't have anything to remember. Hmm. It's just if you find it interesting, go for it because Hmm. nobody's going to test you for it, Hmm. and you don't have to remember dates also. Doesn't matter as long as if you find the events interesting, so you don't it won't be a trouble for you to memorize all. Hmm. Memorize नहीं मतलब बस बैठ जाता है दिमाग। So look at it like a sequence of events. So like even this was World War One, no? कैसे हुआ? So the first thing Soviet wanted power. Hmm. So they sent a man to kill his archduke, and Hmm. then political instability. So I don't know the dates, but I know the sequence of events because it's interesting to me. एक Hmm. बंदे के मारने से पूरा दुनिया वॉर पे कैसे? Hmm. So and the same thing with World War Two. एक बंदा पावर को आया Hmm. and he invaded one country and that became World War Two. कैसे Hmm. भाई? Hmm. कैसे? So that thing fascinated me. I wanted to know how did this one person have enough influence to get the Hmm. entire world against him. Hmm. So if you think about it that way, in a sequence of stories, you'll find it way more interesting. Don't look at it like a bunch of facts, like a bunch Hmm. of dates you have to memorize. Look at it like something that you can invest your time in, take pleasure in reading it. Hmm. You'll find it very interesting. So, Sar, do you see the history as a fascinating part, or just have to remember stuff? What's your intake on it? इट्स डेफिनेटली फैसिनेटिंग। Okay. मतलब अगर किसी बच्चे को सुनाना रहेगा तो अच्छा खासा स्टोरी बना के सुना सकते हैं भाई। Okay. तो So take inspire from the past stories and make it out of like.
Is that way or हाँ just वैसे पूरा का नो पूरा नो, सेम? हिस्ट्री इटसेल्फ इज इतना मसालेदार कि कुछ डालने का जरूरत ही नहीं है। ओके ओके वो ऑलरेडी इतना अच्छा है कि उसको कुछ भी करने का क्यों रिमिक्स कर रहे हैं गाने का, ओरिजिनल गाना अच्छा है, अच्छा ही रहने दो। ओके कूल कूल। सो ये ओके, द मेन पार्ट अभी क्या, वर्ल्ड वॉर 2 राइट? Sorry, or any new part or new concept you want to bring on the table of World War 1? So one thing अभी I'd like to bring to highlight is World War One जब चल रहा था, Japan was a part of Allies. Okay. World War या Two में they became the opposite side. They became Haha. Axis. Okay, okay. So this is one thing I'd like to highlight. And by then, many new countries have been formed. Hmm. So Austria-Hungary became Austria and Hungary separately. Hmm. Germany became smaller than what it used to be. Hmm. So all of this caused problems. All of this caused problems to Germany specifically Hmm. because उनका तो ये treaty of Versailles sign करवा रहे थे US और वगैरह countries जो भी है allies के side में. Hmm. So that means they had to pay for जो भी war का destruction causes था वो resources will be कम हो गए and the amount of military that they could maintain वो भी कम हो गया. The lands that they acquired during wars they had to give it all away plus a chunk of their own land. Hmm. And जो भी resources वो लोग mine कर रहे थे या बना रहे थे they had to give that away to the occupying countries. So it was a bad end of the stick you can say for Germany and the other central powers that lost. Hmm. So that caused resentment among the common people and Hmm. they wanted a government that could resist all of this, which led to the rise in Nazism and eventual rise in power for Hitler. And Hitler was not just a mustache man from Germany, he was actually from Austria. And he was very hate driven and he literally hated everyone that weren't under his Aryan definition. So Aryan definition is blue eyes, blonde hair, white color, tall, वगैरह वगैरह. Hmm. If you think about it, he himself didn't match the description. That is what he wanted. That is what the ideal race was. Hmm. So this concept of race and the fact that Hmm. he thinks these people should be more Hmm. caused. So the ending of the World War 1 was Austria-Hungary lost, and the place was like disfigured. The country So separated, basically, छोटा छोटा हो गया, uh, differentiated like the whole country, and right. they मतलब all, अभी हाँ, and they all तो अभी फ्रांस and they all क्या बोल सकते हैं, they want to repay the मतलब all places, right? The broken they have country to has repay. to repay, Hmm. has to repay the Exactly. consequences. तो Okay, pay this is नो the नो the नो, wage to है द उसके पॉइंट ऊपर इज से पे भी करना पड़ेगा. hmm. द पॉइंट इज दे हैव टू रीबिल्ड देमसेल्व्स एंड दे हैव टू प्रीपे द वॉर कॉस्ट एज वेल। Other Ah, countries also okay, okay. सो reparations. दे आर कंप्लीटली इन रूइंस नाउ। Hmm. Okay, okay, cool. मतलब भिखारी को आप पैसे दो बोल के बोल रहे हैं बस. हम्म। खुद का गाँव भी ठीक करना है और बाकी का भी संभालना है कि भाई ठीक आई एम करवाना है प्रोवाइडिंग। वही तो. हम्म। सो सो दिस काइंड ऑफ एन एंड ऑफ अ World War 1 अभी। Hmm. अभी थोड़ा सा ब्रेक हुआ। सो अभी काइंड ऑफ ब्रेक में मैं क्या करूंगा, बाहर जाऊंगा, थोड़ा रिलैक्स होऊंगा, वापस बैठूंगा थिएटर में। सो ये ब्रेक में वो लोग ने क्या किया, लाइक द होल वर्ल्ड आफ्टर दिस टायर्ड हुए रहेंगे बाकी सब भी, लाइक So you can see there was something called League of Nations. League of Nations will be created to end all wars. हम्म But obviously League of Nations failed because we saw World War II happening right in front of us. हम्म तो लीग ऑफ नेशंस एक तो बना है और हम्म उसके ऊपर से यूएस बिकेम अ मेजर पावर ट्रेड करता है हम्म बिकॉज ये जो भी है फ्रांस यूके हम्म they were in shambles मतलब हम्म बहुत फाइटिंग हुआ तो उनके पास पैसे भी कम थे हम्म so US is away from the war completely on a different continent हम्म so they have a lot of money so what they did something called World Bank and they started giving out loans to countries that need money हम्म। and that is how they got influence in those countries. That is ओके। how US became a major power during this time. हम्म World War One, they were almost insignificant. Matlab, if you think about it, they were not as big as UK and France. But हम्म suddenly they rose in power. They started showing their consumerism power. हम्म That's because they were virtually unaffected by the war. हम्म And they put in a lot of money and they gave money to countries that needed to rebuild हम्म at higher interest rates. So now they are rich. तो इन मीन्स मतलब ये जो भी इंटरवल का स्पैन है ये सब उस इंटरवल में हुआ हम्म वही इंटरवल में जर्मनी में नाजिज्म का आया हम्म कम्युनिस्ट मारे गए हम्म सोशलिस्ट मारे गए डेमोक्रेसी को बर्बाद किया गया हम्म एंड दैट इज वेयर इट स्टार्टेड budding hate of Jews, Romani people, and anyone that was not Aryan by definition. हम्म तो ये इंटरवल में यही चलता था
वर्ल्ड वॉर वन का कॉज मतलब वर्ल्ड वॉर टू कब से स्टार्ट हुआ आफ्टर जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड हम्म सो जब जर्मनी इन्वेडेड किया पोलैंड को दैट्स व्हेन द एक्चुअल वॉर स्टार्टेड उसके पहले भी आल्सो चेकोस्लोवाकिया को हड़प दिया था हम्म चेक रिपब्लिक तो जब इन छोटे छोटे कंट्रीज को हड़प दिया नोबडी said anything हम्म to Germany to Hitler हम्म but after they touched Poland that's when shit became real you can say हाँ तो इस बीच में इंटरवल में ये सब हुआ रीबिल्डिंग पैसे फाइनेंसेस बाय द यूएस हम्म so they were rebuilding सो ब्रेक में हिटलर का मैच्योरिंग एज था, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ये सब हुआ इंटरवल में. हाँ. सो ओके, व्हाट वाज माय क्वेश्चन, आई फॉरगॉट एक्चुअली. सो ओके, कंटिन्यू. सो ब्रेक में इतना सब हुआ, ये कांड हो रहा, लाइक वर्ल्ड वॉर टू के लिए स्टार्ट हो रहा है, लाइक सब पेरिफेरल्स क्लियर हो रहा है, लाइक वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने के लिए. सो हाँ, they suddenly started building up हाँ, सो द क्वेश्चन आई रिमेम्बर इज, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? क्योंकि वो रमेश मर गया. सो नाउ हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ रमेश आफ्टर द वर्ल्ड वॉर there is वन? no Ramesh There is no Ramesh. मतलब मतलब डिफरेंट है मतलब you can see right as Sarthak said 2D and 3D 2D मतलब एक बंदा मर गया वर्ल्ड ऑफ पीस मतलब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया लेकिन वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा नहीं हुआ बिकॉज देयर वर अ बंच ऑफ रीजंस so first off Hitler wanted to be allies with Britain and all these other European powers so मतलब उसको भी influence चाहिए था so that no other छोटा country उसको oppose कर सके and he thought of these people the Germanic people the British people as pure Aryans so he didn't hate them ओके. he hated the other people like the Slavic people, the Russian people, people with the same genes as the Russian people. So he hated all of them. So he wanted more of their area so that he can send his people over there. ओके. So the reason for World War One and World War Two are completely different. So ओह ओके. compare them, so there is no Ramesh and Suresh or anything ओके, in this. एंड ओके, अंडरस्टूड. सो So ओके, that is what. अभी स्टार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वॉर टू, पूरा तवा गरम हो गया, तेल डाल दिया, अभी चटपटा गरम मसाला डालना है अभी. सो व्हाट वाज दैट मसाला? मे ऑफ कोर्स First thing that started. एक हिट. तो भाई Jews को मार रहा था मतलब. He was killing anyone that was Jewish or had Greek ancestry. And they were obviously conscripting people into their armies so that they मतलब army को suddenly यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया sudden increase in the number of people the एंड training intensity हाउ हाउ डिड ही? मतलब they the Germany signed Treaty of Versailles ना so what Hitler did is he pulled back from the Treaty of Versailles तो वापस ले लिया and he started his own production of military weapons of people joining the military and in general this increasing the military strength overall. So obviously people knew that something was wrong. क्योंकि randomly तो इतना increase कोई नहीं करता. But it was happening. So countries were not really prepared for it. This is a very sudden growth. And after we pulled out of India ourselves, it was all Germany, Germany, Germany for it. We didn't care about other countries. So that's what happened. So like Germany surrounds many smaller countries, right? So they were getting worried because of rising Hitler's power, Germany's power. So And can in the meanwhile, he also did. I summarize it as a World War One is because the loss of the king, and World War Two is to become a king, like to rule all the part. And World War One was there was no king, so who will rule? Yes. So this is a comparison between one and two. But Like if you ask history me of what is the reason for World War Two, Mm-hmm. according to me, the reason for World War Two is World War One. The consequences of the World War One was No, not the consequences itself, but okay. the actual happening of World War One Hmm. caused World War Two. Can you Because elaborate? yeah, because after the end of World War One, situation of Germany was कि we are मतलब पूरा डेट में हम लोग और ऊपर आने का है. एंड यही बात हिटलर को सबसे ज्यादा खटकता था कि इवन दो लाइक आर रेस, जैसे रेस का बात किया निहार ने कि आर रेस इज द सुपीरियर, इज वेरी सुपीरियर, सो व्हाई वी आर पेइंग देम, लाइक वी शुड टेक मनी फ्रॉम देम, हमारा स्टेटस वो है. तो ये बात उसको खटकता था. इसके लिए ही वांटेड टू टेक जर्मनी टू द नेक्स्ट लेवल, लाइक सुपर पावर. ये पहला चीज है.
ओके। सो ये जो कीड़ा उसके मन में था, और हम्म। यही कीड़ा एक और बंदे के मन में था जो इटली का बेनेटो मुसोलिनी था। हम्म। सो ये सेम आइडियोलॉजीज दोनों का था। हम्म। सो फिर ये दोनों को जब पता चला कि हमारा सेम थिंकिंग है, हम्म। सो दे थॉट कि हम साथ में मिलके बढ़ते हैं हम्म। एंड लेट्स ट्राई टू लाइक डिफीट एंड टेक ओवर द अदर यूरोपियन कंट्रीज। ओके, द लाइक माइंडनेस ऑफ दीज टू। हाँ। करेक्ट। सो उनसे यही थर्ड हुआ। कैरेक्टर भी है जापान. हम्म। So Japan हाँ also wanted to be a part of that prior, you can say, हाँ access to it. हाँ, करेक्ट, बट Because वो कैसे थे पता है क्या? मतलब वो कैसे है कि हम हमें पार्ट बनना है, बट हम खुद आके नहीं पूछेंगे आपको कि हमको, मतलब आप हमको लेंगे क्या आप? ऐसा कौन, नहीं। जापान? हाँ, जापान जापान इज वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट नेशन। वो ओके। कैसे है कि हमको हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक है, बाकी वो तुम थोड़ा बाद में भाव, देखोगे। लाइक इट्स अ भाव का रहा है, लाइक ट्रिप के लिए आ रहा नहीं, है क्या? भाव नहीं खा रहा है। ओके, भाव भी नहीं है नहीं ना, नहीं, तो नहीं, नहीं नहीं, वो नहीं, कैसा है पता है क्या बात कि आ, हम हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो कम्प्लीटली यूनिक है। हम्म। हमको तुम्हारे साथ मत जोड़ो, ओके। और हम तुम्हारे साथ खुद नहीं आएंगे ज्वाइन करने। अगर तुमको ओ- जरूरत है तो हम ज्वाइन करेंगे। ओके। हमारी इच्छा है, बट हम खुद से नहीं आएंगे करने को ऐसा। हाँ, मतलब जब तक लाइक तू दे वोंट बुलाएगा स्प्रेड नहीं देयर तब हैंड्स तक इन मैं फ्रंट ऑफ आऊंगा अस। नहीं। ओके। see, basically करेक्ट जापान करेक्ट is एग्जैक्ट। saying, भाई तो है तो नहीं है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने रूल में हूँ, मैं तो अपने एरिया में हूँ, मैं अपने एरिया को कब्जा करना चाहता हूँ, हम्म। तो अपना देखने का। हम्म। एंड अगर हम दोनों बड़े पावर्स ही हैं, इफ वी बोथ कंबाइन, अगर किसी को बेनिफिट हुआ तो ठीक है, अगर नहीं भी हुआ तो हमारे एरिया में इससे कोई पावर नहीं कि जो हमको अपोज कर सके. एंड ऐसा है. वन मोर क्वेश्चन टू मी इज द शिफ्ट ऑफ जापान, लाइक पहले वर्ल्ड वॉर वन में ए साइड था, लाइक अचानक से चुप चुप के इधर क्यों आया, लाइक? देयर इज नो शिफ्ट, देयर इज नो शिफ्ट। द थिंग इज, उसको जिधर फायदा है वो उधर है, खत्म। और दैट इज एंड शिफ्ट, फायदा भी राइट? नहीं। हाँ। हाँ। नो, बट वो कैसा है पता है That is क्या? because जापान के पास मोनार्की था ना, तो it used to work with monarchy. They used to take the king very seriously. ओके। So it depends on what the king wants. The king wanted to side with the axis. And to be honest, more than the king, I told you, the monarchy में ministers भी रहते हैं. हम्म। तो ये ministers और ये war generals जो भी है, हम्म। इनका influence बहुत ज्यादा है. So they also have influence policies in Japan which cause them to align हम्म। themselves with the axis power. हम्म। And that and they had a common enemy in Asia. That is Britain. Britain was colonizing so many countries in Asia, and Japan wanted to be the colonizer. Japan wanted to be the only powerful country in the entire Asia Pacific region. हम्म। They didn't want any European country. They didn't want British. So, हम्म। looking at the common enemy, they also joined the Axis. हम्म। The common enemy being Britain and Russia and all the bigger countries that were हम्म। there. So, okay, let's start So they from didn't the, want these countries in Asia okay, Pacific. let's start from the second inning one. मतलब इनिंग, इनिंग नहीं, स्टार्टिंग, सॉरी, स्टार्टिंग इज वर्ल्ड वॉर टू का। फर्स्ट वन इज द बर्थ ऑफ हिटलर एंड हिज अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड हिज फिलोसफीज एंड दिस पार्ट। ये हुआ इंटरवल में। उसके बाद एक ट्रिगरिंग पार्ट क्या था? That's a thing. That's a misconception. Hitler actually was a soldier in World War One, and हाँ। his life was spared by the British people. मतलब एक ब्रिटिश बंदा था, ब्रिटिश सोल्जर था जिसने हिटलर को मतलब माफ कर दिया. He didn't kill आई Hitler डिडंट किल हिम, in ओके। World War One. हाँ। करेक्ट या। So, which is why he had deep respect for the British people, and he wanted to ally with the British, but the British did not want to ally with him. हाँ। ओके। And that, and as a young man, he was rejected in the art school, and he thought the Jews were the ones holding and running the art school and the bands, which is why हम्म। he was cool, which is why he was not getting into the art school. हम्म। तो ये सब था और ये ingrown hatred जो था, it manifested into different things, हम्म। and as we saw, that led to Holocaust हाँ। of the So Jew people. why the when I say the birth of Hitler, it doesn't mean he actually born. It's a new phase. It's of a new phase. He entered a new phase of his life, and the surroundings and the peripheral, the atmosphere, he matured in different way, and he understood the world with his own point of view. And what is the triggering point of the World War II? Invasion of Poland by the Nazis. Okay, invasion of the Poland. So और पोलैंड में yeah, इन्वेड क्यों किया? Poland, he wanted more space. It was called Lebensraum. Okay, it means living space. He ओके। wanted to या करेक्ट। expand Germany so that more people can live over there. More people, more ओके। Aryans can be born, हम्म। so that they can take over more lands.
So, हाँ. in general domination of Hmm. the Aryan race. Hmm. That So is. he wanted that, and the Polish people were not Aryan people according to him. Hmm. So he, along with this is something weird. Okay, so USSR allied with this thing, what's this, Nazis while invading Poland. That is something surprising because Hmm. in the later part of the wars, USSR was completely against the Nazis Hmm. Hmm. because that's when Nazis came to invade Russia. Hmm. Until Russia was not being invaded, they were ready to team up with the Nazis to invade Poland. Yeah, so here there So is that a is how point the कि happens. वही जैसे निहार ने मेंशन किया, यूएसएसआर और जर्मनी का ट्रीटी था, पीस ट्रीटी था Hmm. 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 कि दे वोंट अटैक ईच अदर। और अगर कुछ, क्योंकि ना सिनेरियो कैसा था एक्चुअली बिफोर द इन्वेजन ऑफ पोलैंड भी, जर्मनी का ऑस्ट्रिया, जो प्रेजेंट अभी का मतलब आफ्टर Hmm. वर्ल्ड वॉर का जो ऑस्ट्रिया वगैरह है, Hmm. उस पे भी उसका नजर था। एंड मतलब उस एक रीजन को उसको शायद सुडेटलैंड बोलते हैं, जिसमें वो रीजन में जर्मन्स थे इन ऑस्ट्रिया, लाइक Okay. जर्मन स्पीकिंग Hmm. पॉपुलेशन था। सो ही वाज लाइक ये तो जर्मन ही है तो हमारे साथ ही होने चाहिए। Hmm. सो वो तो ऐसे ही मिल गया था। Hmm. एंड सेकंड थिंग ये हुआ कि ऑस्ट्रिया का जो तभी प्राइम मिनिस्टर है, जो हेड ऑफ द स्टेट था, Hmm. तभी मतलब हिटलर ने डायरेक्ट अंदर घुस गया था वो। एंड ही वाज लाइक कि आपका कंट्री में सब हालचाल People, बराबर we चल रहा need है one nation. Hmm. क्या। एंड तभी नाजीज का जो पार्टी का मेंबर्स था, दे वर Hmm. द मेंबर्स ऑफ ऑस्ट्रियाज गवर्नमेंट एज वेल। Hmm. तो उसने इन्फिल्ट्रेट करके रखा था, नॉट बाय मिलिट्री एक्शन Hmm. बट थ्रू दिस कि उनके But like पॉलिटिक्स में घुस गए। wits, Hmm. या right? सो इसकी वजह से क्या हो गया कि विदाउट इवन अ वॉर और इवन एनी अटैक, ऑस्ट्रिया तो ऐसे He ही हाथ won में आ गया। without lifting a finger. Hmm. Exactly. या Because he was, I told during World War One, he was influenced by Otto von Bismarck बोल के बंदा है जो जर्मनी को यूनिफाई कर रहा है. So Hmm. Hitler was very much influenced by this guy, Otto von Bismarck. Hmm. He studied history. He Hmm. found him very impressive, and he also believed in the same thing: one nation, one ruler. That is, one Hmm. nation, one ruler under the One same flag. person. Hmm. So that is why under one flag, right? One language, one nation, one people. Hmm. So So that is what? what influenced him. He wanted Uh, to be like Bismarck. He wanted more land for his people. hmm. So that is what happened. So what I understand is एक प्लेस है और एक प्लेस में से बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा माइग्रेट हो गए अलग अलग प्लेस में, और इसको सबको एक साथ लाना था, लाइक आर्यंस को एक साथ लाना था, लेकिन He लाने के wanted to लिए, get everybody. हाँ लाइक Right. लाने के लिए एक्चुअली एक्चुअली वो, प्लेस नहीं है, हाँ, प्लेस के लिए वो लाने से अच्छा वो प्लेस ही कॉन्कर कर लिया। करेक्ट करेक्ट, बट तो इसमें ना वैसा। क्या, ये मतलब पॉइंट क्या है कि ही वांटेड आर्यन पीपल टू जॉइन हिज कंट्री एंड अदर पीपल टू सर्व हिम एज ओके। सर्वेंट्स। Hmm. हाँ। यही बेसिक एम था उसका। एंड हम्म। वही जैसा लेबेंसप्रॉम ये वर्ड यूज किया, दैट हम्म। मींस लिविंग स्पेस। हम्म। सो उसके पास जर्मनी में जगह ही नहीं था, तो ही वांटेड टू स्प्रेड अक्रॉस ओवर यूरोप, फिर हम्म। ऐसा इफ पॉसिबल ब्रिटेन वाला आइलैंड वगैरह ये सब। हम्म। सो थिंग इज की अभी ट्रिगरिंग पॉइंट की बात करें, तो जैसा मैंने बोला ऑस्ट्रिया का जो इन्फिल्ट्रेशन था ये कंप्लीट विदाउट एनी वॉर था। हम्म। ये जस्ट उनके पॉलिटिक्स में घुस के उसके बाद तो एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि ऑस्ट्रिया का जो हेड ऑफ द स्टेट था उसने पूछ लिया था पीपल, मतलब उनके लोगों को, कि अब हम लोग को मर्ज करना है या फिर हमको इंडिपेंडेंटली रह के रिवोल्यूशन करके इंडिपेंडेंट होना है। हम्म। सो देवर लाइक कि नहीं, वी वांट रिवोल्ट वगैरह, वी आर विद हिटलर, हिटलर के हम्म। पास अच्छा मिलिट्री है और उसका पोटेंशियल है कि हमको वो बेस्ट इन द वर्ल्ड करके, मतलब Provide करें. बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कर देगा। या हम्म। सो दे मर्ज्ड विद जर्मनी इजीली, ऐसे ही हो गया। हम्म। एंड फिर One more thing प्रॉब्लम क्या about हुआ। Lebensraum. हाँ, So one more thing about Lebensraum is that he was actually awarding people. मतलब अगर ज्यादा बच्चे हैं तो तेरे को ज्यादा पैसे देंगे और ज्यादा सोशल सिक्योरिटी मिलेगा, and you'll have a higher status in the country हम्म। if you had more Aryan kids बोल के उसका एक प्लान था ऐसा. So they had specific areas where these desired people, that is the SS, मतलब एक था SS बोल के. So the SS division is very हम्म। hateful. It is not like the normal army. It is like a police force that is completely hateful. हम्म। Crimes बहुत कर रहे थे वो उस time पे. And these guys were like the pure Aryans. So हम्म। they slept with multiple women and had multiple kids. हम्म। And these women that had multiple kids, they were given higher social status, high, हम्म। like free movie tickets, free vacation time.
more money, all of that, higher status in general in the Nazi Empire. Hmm. So all of that, they had all of that for them. Hmm. So he was basically awarding so that more repopulation of Aryans are there. Hmm. And that was also one of the triggering causes for Levinson. He wanted more space, more people. Hmm. Love towards his own people, like race, sorry, learn towards a particular race. Race, इनको बढ़ाना है और particular. I want to rule all. Yes, and Hmm. other people should work under me. Right? हाँ, non-Aryans And should work under me, and the Aryans should be all over the place, and I want to rule the place. That was his Yes. ideology. Cool, cool, cool. एंड द पॉइंट इज कि जब ये ऑस्ट्रिया वाला सिनेरियो चल रहा था, Hmm. तो वो आगे और बढ़ गया था. इवन कैप्चर्ड वन मोर कंट्री, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वो Czech तभी. Republic. हाँ, चेक चेक रिपब्लिक, करेक्ट किया. तो चेक रिपब्लिक को जब उसने कैप्चर किया, तब मतलब ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ कैप्चरिंग, तो तभी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था चेम्बरलिन. ठीक Hmm. है. सो चेम्बरलिन वाज कि मतलब सबका नजर पड़ गया था उसपे कि ये कुछ तो करने वाला है अभी खतरनाक, जिसकी वजह Hmm. से पूरा वाट लगने वाला है वापस यूरोप का. Hmm. सो ही वेंट देयर एंड एक म्यूनिक में एक मीटिंग हुआ. Hmm. जर्मनी में म्यूनिक में मीटिंग हुआ, जहाँ पर दे वर डिस्कसिंग कि इसको कैसे रोके. सो वो लोग ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ऐसा था कि वी विल लेट हिटलर टेक दैट पार्ट व्हाट ही वांट्स, एंड आफ्टर दैट Czech Republic. एक्सपेक्टेड दैट कि ये शांत बैठ जाएगा. Okay. क्योंकि और एक इसका रीजन क्या था कि रशिया, जैसे हमने पहले डिस्कस की कि रशिया और जर्मनी का पीस ट्रीटी था. Hmm. सो वो दोनों तो एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे. Hmm. ब्रिटेन और फ्रांस ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 के पहले से ही फ्रेंड्स है. Hmm. सो उनके पास काफी पावर है इनको रोकने को. बट सिंस ये दोनों भी एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, सो कुछ ज्यादा ये नहीं होगा. बट और रशिया का भी ये लोग फ्रांस और ब्रिटेन के साथ अच्छा टाइस था. Hmm. It's तो like उनको लगा कि हाँ, वो अगर एग्जाम्पल में ले, एक बच्चे को पूरा एक कैडबरी चाहिए था बड़ा वाला, लेकिन मम्मी ने बोला कि चल ठीक है, एक छोटा सा एक्लेस दिया, लाइक शांत तो बैठेगा, लेकिन वो शांत हाँ, बैठा नहीं. बट ये पूरा Exactly. उल्टा ही हो गया. हाँ, That is करेक्ट. Hitler. No, no, that is Hitler. Right. हाँ, दैट Correct. इज हिटलर, लाइक. हाँ. हिटलर का मेन क्वालिटी ये है कि वो सुनता ही नहीं. हाँ. कुछ भी करेगा वो पहले हाँ हाँ सबको हाँ बोलेगा, हाँ मैं ये करूंगा, He ये didn't listen to ये भी some करूंगा. military advisors. Military हाँ. advisors तो कह रहे थे कि तो ये करेगा तो हम जीतेंगे. But he is like नहीं, मेरे को हम्म. यही करना है. And they ended up losing. हम्म. और ये ट्रीटीज का भी बात करेंगे ना, एक एक ट्रीटी वो साइन करता था, ऐसा हम्म. मुंह पे उसको इग्नोर कर देता था. जब अगर कोई रूल फॉलो करना है वो नहीं करता था, इवन तो उसने एक्सेप्ट किया कि मैं करूंगा. हम्म. तो भाई, सो क्या हो गया कि इसने म्यूनिक एग्रीमेंट को भी डिक्लाइन कर दिया. हम्म. और जब इसने डिक्लाइन करके पोलैंड पे अटैक किया, और हम्म. अभी हाँ, यहाँ पर क्या सिनेरियो था, पोलैंड पे अटैक करने का मेन पार्ट इज रशिया को भी पोलैंड चाहिए था. ओके. ठीक है. सो उनके दोनों के इंटरेस्ट में था वो. सो सो. उनका ना टाइज और बेटर हो गया. हम्म. सो देवर लाइक कि एक काम करते हैं, जर्मनी वेस्ट से अटैक करेगा, हम्म. आप ईस्ट से करो, हाँ. और विल कैप्चर हाफ ऑफ कंट्री. हाँ. ठीक है. बट रशिया का मतलब रशिया कैसा था कि ओके वी हैव गुड टाइम विद जर्मनी, बट ऐसा नहीं कि हम हिटलर पे पूरा ट्रस्ट करते. स्टालिन बहुत गंदा आदमी था. उसका हम्म. गंदा मतलब ऐसा गंदा नहीं था, वॉज वेरी स्मार्ट कि हाँ भाई, हम हिटलर का मतलब सुन तो रहे, बट मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, मेरे को ये पता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है, संकी है हम्म. थोड़ा सा. सो जब पोलैंड ऑक्यूपाई हो गया, तो रशिया वाज लाइक कि वो तो हमारा वैसे भी रीजन ही है, क्योंकि हमारे रेस के लोग उधर रहते हैं. हम्म. सो वो तो हमारा ही रीजन है वैसे. बट जर्मनी ने आधा ले लिया था और आधा रशिया के पास था. सो हम्म. ये जब हुआ ना, तब ब्रिटेन और फ्रांस वाज लाइक कि या दिस इज अ प्रॉब्लम, हम्म. एंड इससे हमारे इकोनॉमी या फिर कुछ भी, हमको खुद को एज अ कंट्री एग्जिस्टेंस के लिए डेंजर है. हम्म. एंड तभी चेम्बरलिन को अपना गलती समझा कि ओ ये म्यूनिक एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए. Did Nihar freeze or lost his connection? यस, लॉस्ट दिस कनेक्शन. हाँ, नहीं, ओके. Resume. Okay, cool, cool, cool. No problem. हम्म. या. सो यहाँ पर चेम्बरलिन को अपनी गलती समझ में आ गई कि लाइक म्यूनिक एग्रीमेंट डिक्लाइन हो गया यहाँ पर. हम्म. एंड हाँ, अभी यहाँ पर एक और पॉइंट क्या होगा कि हाँ, सो ये थोड़ा सा अलग, थोड़ा अपन नॉर्थ साइड पे जाते हैं अभी. सो रशिया को जैसे पोलैंड पे ये था कि वैसे भी ये हमारा ही पार्ट है, वैसे हम्म. ऊपर नॉर्दर्न साइड में फिनलैंड भी था. ओके. ठीक है. एंड उसका क्या इशू था फिनलैंड का कि रशिया
और जर्मनी ने जब पोलैंड पे इन्वेड किया, देवर लाइक रशिया को ऐसा लगा कि अभी जर्मनी फिनलैंड पे अटैक करेगा, और हम्म ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को भी ये लग रहा था कि ये होगा। हम्म बट उल्टा इसमें क्या हो गया, रशिया ने जर्मनी से पहले ही फिनलैंड पे अटैक कर दिया कि लाइक ये हम फिनलैंड को ले लेंगे। ओके। बट इसमें इशू क्या हुआ, जर्मनी का ये प्लान ही नहीं था। हम्म जर्मनी वेंट टू डेनमार्क, डेनमार्क हम्म से दे वेंट टू नॉर्वे, हम्म एंड Denmark was डेनमार्क और नॉर्वे conquered कैप्चर। Denmark. In 15 hours, they captured Denmark. हम्म द होल कंप्लीट स्ट्रेटेजी इज ब्लिट्जक्राइग, हम्म मतलब It's called Blitzkrieg. स्टेल्थ, स्टेल्थ एंड स्पीड, ओके। मतलब शांति से घुसने का, बट हम्म एकदम इतना फास्ट घुसने का कि हम्म एनिमी को टाइम ही कि नहीं उनको मिलेगा समझ सोचने में नहीं है कि क्या करते हैं, हम्म समझ में नहीं आएगा उनको क्या हो रहा है। हम्म का। एंड रात दिन तो कुछ भी French हो, ये people, लोग अटैक करते थे। they built a wall. They built a Magnus line बोल के एक है. हाँ, The French मैगनॉट people लाइन एट built that फ्रांस wall, बॉर्डर ना। and या what they thought was उसके बगल में तो फॉरेस्ट है, जर्मन तो फॉरेस्ट में हाँ, से नहीं आएंगे, so we will cover the area. क्लासिक, What हम्म दिस इज Germans क्लासिक स्टोरी। Germans they went from the forest. मतलब हम्म क्या दीवार के पार ऐसे गए, हम्म फॉरेस्ट में से गए. So they एक were हाँ French also bamboozled, they were not prepared, reinforcements नहीं थे, under हम्म prepared थे, so they were taken over like that. इट्स And लाइक the line फ्रांस that ने they भी। built didn't help them at all. हाँ, इट्स लाइक दे प्रिडिक्टेड द अनप्रिडिक्टिंग पार्ट, लाइक इधर तो नहीं आएंगे, वही ठीक है तो चलेगा, लेकिन उधर से ओ शिट, हाँ अब क्या वही तो करेंगे। ओके। हाँ। या ये तो क्लासिक इंसिडेंट है पूरा वर्ल्ड वॉर का, लाइक मेजर people इंसिडेंट make है ये। fun of सरप्राइज France for अटैक। lifting a white flag. हाँ। हाँ। अभी भी वो व्हाइट फ्लैग बोल के फ्रांस का फ्लैग बोल देते हैं, मतलब मीम्स के हम्म आगे जस्ट पुलिंग देयर. ओके ओके, कूल कूल कूल। सो इन समरी पोलैंड बिकेम स्क्वीज, लाइक इधर से भी इधर से भी, और पिचक गया भी। पोलैंड तो अब चल क्या दिया, अब अब मैं क्या पोलैंड का करूँ, तो हो लाइक गया। स्टार्टिंग में पोलैंड तो गया, हाथ ऊपर कर नहीं लिया, नहीं उन, हाँ, लाइक। तो हम किधर थे, भी that was the डेनमार्क पे starting थे। point. हाँ। या दैट वाज द स्टार्ट, करेक्ट। क्योंकि हम्म तभी ब्रिटेन और फ्रांस को समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा हम्म है। ये एंड सब ये भी जो, होने वाला है. या एंड ये जो फिनलैंड वाला पार्ट हुआ, हम्म सो जर्मनी ने, जैसा हम बात कर रहे थे, स्टेल्थ एंड स्पीड का स्ट्रैटेजी यूज करके हम्म दे वेंट इनटू डेनमार्क, इजीली कैप्चर हो गया। दे हम्म वेंट टू नॉर्वे, इजीली कैप्चर हो गया। नॉर्वे का ये क्या था, और एक एडवांटेज, कि नॉर्वे एकदम नॉर्थ में था, थोड़ा आइसोलेटेड भी था। एंड हम्म सेकेंडली उधर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत खतरनाक ओके। थे, एंड ब्रिटेन को भी वो चाहिए थे। सो ब्रिटेन मतलब लाइक इम्पोर्ट करते थे उधर से, सो हम्म उनका इम्पोर्ट्स भी बंद हो गया। एंड हम्म यही टाइम पे इवन जर्मन नेवी भी बहुत आगे बढ़ा, क्योंकि दे वांटेड दैट एरिया, नॉर्वे के बाजू वाला जो सी वाटर एरिया है, दे हम्म वांटेड टू कैप्चर दैट। और सबसे खतरनाक मतलब यहाँ पर एक इंसिडेंट ये है कि जर्मनी का एयरफोर्स भी रजिस्टर्ड नहीं हो सकता था अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, हम्म बट स्टिल ही सेटअप इज लुफ्टवाफे। ओके, और फिर हिटलर वो, बीइंग हिटलर ही, ओके। हाँ, उसने सेटअप कर दिया। हम्म एंड ये टाइम पे ऐसा था कि उसका एयरफोर्स ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था ओके। इन ऑल हिज आर्मी फॉर्मेट्स। हम्म या Exactly. फिर सो उसके बाद, वर्ल्ड वॉर वन में देयर वाज एनी एयरफोर्स अटैक, और Yes, वर्ल्ड there वॉर, was Air Force, but it was not advanced. ओके या एडवांस, मतलब ओके अभी ओके। World War II में you'll see so much of technology being used as compared to World War One. हम्म IMAX हो गया, World War One IMAX। is like they're fighting with हाँ। sticks and stones. हम्म You feel like they're fighting with sticks and stones. But हम्म World War II में like भाई बारूद है, गन है, हम्म nuclear bomb भी बना रही है. हम्म So the thought of nuclear bomb wasn't even existing in the time of World War One. And हाँ। suddenly, boom, Hiroshima and Nagasaki happened. हम्म So how did that happen? Because हम्म these technological advancements they happened so rapidly because they were the necessary. They were the हम्म need of that time. हम्म So these inventions were very crucial in Germany's rise to power. हम्म सो कूल कूल कूल। सो अभी तक कितना हुआ, लेट्स रिकैप क्विकली। और न्यू मीटिंग बनाए क्या, ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है आई नहीं, आई गेस। वाज सजेस्टिंग कि वर्ल्ड वॉर का इधर टू का ये फर्स्ट ब्रेक। पार्ट यहाँ पर खत्म करते हैं, सेकंड पार्ट नेक्स्ट इसका रखते हैं, ओके, नो बिकॉज वहां पर प्रॉब्लम। बहुत कुछ है करने को। हाँ डन, लॉट टू डिस्कस, सो वी कैन डिस्कस तीन बैठ के आराम से, चाय पे चर्चा टाइप। अब तुम लोग भी पानी रखो हाथ में, लाइक सार अभी भी खा रहा है, ऐसा तुम भी एक फ्रूट्स प्लेट रखो, थोड़ा चिल मारते मारते डिस्कस करेंगे वो भी। इसका पार्ट टू करेंगे। सो कूल, सो लेट्स एंड हियर। कूल कूल कूल। सो निहार भाई, थैंक यू फॉर कमिंग and share your thoughts, and it was a good एंड का session, right? आते रहो भाई, आते रहो। हाँ वी विल आज। डिस्कस मोर हाँ स्टफ लाइक दिस। बुलाओ आएंगे. हाँ हाँ हाँ, like it's all depends on time, कभी भी फ्री हो, we are
I am free anytime. बिल्कुल Just message me and I'll share the link and you can join and share your thoughts. So cool. Thank you, everyone. Yeah. So here we conclude the podcast of World War II half, like part one of the World War II, and we discussed a lot. And I'll summarize it for you after a while. So thank you, Nihar, for attending the podcast and expressing your views. I appreciate, and I'm looking forward for more meetings and more listenings. And डेफिनेटली thank you, Sarth, मेरे को तो मजा for आता है, मेरे को तो मजा ही आता है भाई। अगर हाँ कोई सेम इंटरेस्ट वाला बंदा आता है बात करने को तो हाँ, like linking same interest. Actually, we are also doing the same thing. Like अलग अलग interest के लिए अलग अलग लोग बैठे हैं and I'm collecting those interests and making a community. It's same history repeating itself and not repeating. Actually, it's happening. History happening itself. फर्स्ट हाँ, so वो है. So it's a cool interaction. You met Sarth and नाइस चेंज so exchange of thoughts. Think it's a quality meeting and quality talks. So looking forward and thank you, Nihar, and thank you, Swat, for attending in abruptly attending the meeting. अरे मेरे ही शो पे मैं कभी भी आ सकता हूँ भाई। थैंक यू यार फॉर Alright. कमिंग यार। Okay. Thank you. श्योर Cool. थैंक यू